Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, crazy Saturday तो discuss तो करना ही है. और yes, of course, like I thought, let me come out with a review video of only Chelsea. लेकिन फिर हुआ पागलपंती मिलान डाबी और उसके बाद और भी पागलपंती हुआ. तो काफी सारा डिस्कस करना था, तो इसलिए मैं सोचा आ जाते हैं. विल डिस्कस एंटायर यूरोप और यस, काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, काफी काइंड ऑफ डिसीजंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कोचेस एज वेल. तो हम डिस्कस करेंगे थोड़े टैक्टिक्स एंड सम ऑफ द आर्गुमेंट जो आप कर सकते हैं डेफिनेटली इन द चैट. तो बिग अप सब लोग जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को शाउट आउट है भाई. Absolutely, Darren, भाई, member of Almighty Blues FC, Almighty fan. Thiago Silva, what a fan. Ball to Chile, man. Can't believe he's 38. Exactly, age is just a number, जैसे मैं बोलता हूँ. And again, let's not forget to hit that like button, of course. हो सके तो आप शेयर करिए, as well as subscribe to our channel. बाई चांस आप नहीं किया. बाय द वे, शाउट आउट है क्विकली इवन टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, हमारा दूसरा चैनल. इट इज टैग्ड ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Yes, we are going live even Almighty Sports Plus what maybe literally 4 hours from now, और वो होगा obviously India versus Pakistan. So remember that. Madada United, thanks for joining. Modit as well, 1 hour buzz. Thanks for joining. Lou Manu as well. Like Lou Manu says, definitely helps. Absolutely. Yes, a couple minutes late, but I then published it at 3 p.m. on my community page. So I hope that makes sense anyway. Chelsea were lucky, but West Ham should only blame themselves, is what Lou Manu says in one sentence. Again, वही है, मतलब we could have discussed quickly and I could have come up with my take. Like, I thought, let me actually have a proper discussion, because there's a lot of talking points, or we'll be talking about all the points here as well of as other matches. Big up, thank you. Chinmay, all well. आप अच्छे हो, hopefully. Bogendra as well. Best defensive midfielder right now. Wow. Chomini is what you're talking about, maybe. As in, I'm just kind of asking. You tell me. Big up the almighty Abhishek. Of course, an almighty board member. Thanks for coming on, bro. As always, yes, we were having a lot of discussion in our members group chat yesterday, but now let's have a proper discussion in detail now for all the matches. Kimmich, क्या बढ़िया गोल था भाई. मुझे, मैंने देखा था गोल. Absolutely. Ankit भैया, those who are saying West Ham are robbed, where was the energy when Antonio was playing WWE Silla? मैं दिखाने वाला हूँ, मैं प्रूव करने वाला हूँ. So again, yes, it's not just that. I'm not here to defend Chelsea. वो नहीं है. As you know, it's a fan channel for all to see. हम हर एक aspect बात करेंगे. So don't worry, we'll be talking about each and every aspect, not just in that game, but in all the games. और लिवरपूल वाले मैच में भी कुछ कंट्रोवर्सी थी, और not just that, I think एक और मैच था प्रीमियर लीग में. There were 3-4 मैचेस जहां पर proper VAR decisions were like, okay, something's happening. भैया लिवरपूल वर्सेस एवर्टन मैच, या वो भी. There's a new cheat in town. He's a technically. Oh my god. Okay. Can Spurs win the league? Wow. Antonio Conte has done similarly for Chelsea in 2017. Who knows? आप कब से फुटबॉल देख रहे हो भाई? फुटबॉल एज सच मैं पहला मैच था 94 वर्ल्ड कप में, लेकिन प्रॉपर लाइक इंटरनेशनल फुटबॉल वीक इन वीक आउट में शुरू किया था मे बी 98 वर्ल्ड कप से, और फिर चैंपियंस लीग शुरू किया था 2000 से, और प्रीमियर लीग और बाकी लीग शुरू किया था सेरिया एंड ऑल 2002 से. दैट्स व्हाट मैं बोलूंगा भाई. यूसीएल का मैच डे 1 का वीडियो बनाओ ना. अरे भोगेंद्र, हम प्रॉपर लाइव आएंगे यार पैनल के साथ. होपफुली विल बी डिस्कसिंग एज वेल. कल होने वाला है यूसीएल, सो वो भी शाउट आउट एब्सोल्युटली. कल हम करेंगे यूसीएल के लिए. Kai Havertz played so good at Cam. Well, again, did he play at Cam? We'll definitely see. Okay, कोई नहीं. कर्मा सीएससी दोस्त कर्मा बोल रहे. सेविया या बारसा सेविया भी डिस्कस करेंगे एब्सोल्युटली. तो थैंक्स अगेन फॉर जुड़ने के लिए भाई. सर क्विज कब होगा वो भी है इन लाइन है. वही इतना सारा फुटबॉल हो रहा है ना अभी, तो भाई बीच में क्विज का टाइम नहीं मिला, और ऑफ कोर्स पैनल खुद भी बिजी रहती है. तो एज सून एज दे आर फ्री एंड वी हैव लाइक कपल ऑफ आवर्स, मैं तो तैयार हूँ यार. सिंपल एज दैट. तो होपफुली नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मैक्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करेंगे भाई. किससे शुरू करें? थोड़ा सा आई नो चेल्सी पर तो आएंगे ही, ऑब्वियसली मिलान डाबी तो आएंगे ही. दीज आर प्रोबब्ली टू मेन एस्पेक्ट कल के मेरे लिए, लेकिन आई थिंक शुरुआत बनता है इस मैच के लिए. और यूसीएल प्रीव्यू कल है. अगेन पीपल आस्किंग इट बी टुमारो पीपल, बट वील बी डिस्कसिंग इन ब्रीफ थोड़ा सा अभी. ये देखिए, दिस इज व्हाट, मतलब इट किक्ड ऑफ द डे. सैटरडे मैडनेस जो है ना, आई नो दैट हम प्री मैच के लिए लाइव थे उस समय. वी डिड हाफ वॉच अलोंग आल्सो ऑफ दिस सेकंड हाफ का, लेकिन इतना सारा एपिसोड था इन दिस एवर्टन लिवरपूल मर्सीसाइड डर्बी. हमेशा कुछ ना कुछ होता है.
I have to commend Frank Lampard. I definitely have to commend Frank Lampard because as much as you can say that Liverpool are not that team जो लग रही थी maybe last season, और आई नो 9-0 जीते थे वो बोर्नमथ के साथ, फिर भी एक होता है ना एक स्ट्रक्चर डाला, तो आर्ग्यूबली आई थिंक लिवरपूल और प्रॉब्ली नॉट द बेटर टीम बट एवर्टन वाज इन दिस मैच. आप बोलिए what it was. Definitely a proper derby, like Abhishek is saying, absolutely, and CFC Blues agrees as well. Oh yes, UCL fantasy भी करना है absolutely. बिल्कुल यार, बिल्कुल यार, उस पर बात करेंगे when we talk about Milan derby as well. Don't worry about it, ईशान. नमस्कार आशीष भी. देखिए यहाँ पर, और ये टॉकिंग पॉइंट था, मेजर टॉकिंग पॉइंट. यस, अब ये ऐसे ऐसे देखे ना, पता नहीं, अब अगेन मे बी आई एम वेयरिंग ऑपोजिशन हैट. कल भी मैं लाइव पर सिमिलर चीज बोल रहा था, लेकिन आई थिंक अगेन आप अगर देखो ना, द पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर मोमेंट हैज बीन टेकन एक सर्टेन एंगल के साथ. आप लोग बोलिए, वुड यू से दैट 100% ऑफसाइड था? प्रोबेबली यस, लेकिन इफ यू एक्चुअली थिंक, थोड़ा सा मुड़िए और इस एंगल से सोचिए आप what it is, I think it's probably level. Again, I might be wrong, लेकिन थोड़ा सा there were a lot of people Twitter में जो had got a picture from a different angle और वो on the मतलब line था, मतलब that is what I would say. लेकिन again वही hairline, तो चलो ठीक है, VR probably gave it as offside. I won't discuss too much because it is what it is. आप लोग बोलिए, do you think it was definitely offside or not? कॉर्नर कोडी obviously scoring and celebrating और फिर offside हो गया, क्या ही तो करे, लेकिन ऑफ नहीं था. आशीष बोल रहे इंटरेस्टिंग, मतलब वही है, एक इस पिक्चर ही मतलब दिखा रहे ना इन दैट एंगल की लग रहा है ऑफसाइड, मतलब इन माय ओपिनियन, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन दिस वाज द मेजर टॉकिंग पॉइंट. एंड अगेन आप देख रहे हैं भाई फ्रैंक लैम्पार्ड क्या बोले इसके लिए, आप देखिए क्लियरली, मतलब डू यू एग्री विद फ्रैंक लैम्पार्ड और नॉट? ये अराउंड 76 मिनट हुआ था, जहां तक मुझे याद है, अगेन दिख रहा है स्क्रीन पर, तो 76 मिनट था. तो यस, वर्जिल वैन डाइक विद दैट टैकल, इज दैट अ लेग ब्रेकर? Is that a leg breaker? Matlab, how did he escape that? How did we are not, kind of reprimand Virgil van Dijk uske liye? आप लोग बोलिए, is there a soft bias or not? Again, Liverpool fans in house, आप लोग बोलिए, what do you all think? Was Virgil van Dijk lucky in that aspect or not? Yes, not just Chelsea उस पर आएंगे, and a couple of other clubs, लेकिन वही है, absolutely. यहाँ PSG का भी है बात करना, absolutely. I love Frank, but when Salah, Nunez and Diaz can't score against Cody and Tarkowski, then something is wrong. Interesting. Liverpool, Chelsea and City will get the karma. Wow. क्या हुआ यार मैन्यू इन सिमिलर सिचुएशन, yesterday Spurs were given goal, वही है उस पर भी बात करेंगे. लेकिन वही है, 0-0 Liverpool, not a great start to the season, let me tell you. Apart from that Bournemouth game, वो convincing नहीं लगे हैं, तो I think there's a big question, where will Liverpool end up, you tell me. लेकिन वही है, जैसे आप लोग ने बोला स्पर्स का, अब स्पर्स मीनवाइल वो भी एक लंदन डर्बी था, एंड ऑफ कोर्स लंदन डर्बी भाई, इट वाज सपोज्ड टू बी लिटिल बिट हीटेड अप. यस, इट वाज स्पर्स Fulham, and Spurs were expected to kind of win that game, or already 2-1 they were leading. एंड फिर क्या हुआ, फिर बेसिकली रिचार्लिसन स्कोर्ड, और बहुत मस्ती में उन्होंने शर्ट निकाला, पूरा सेलिब्रेशन कर दिया कि क्या ही तो कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज द थर्ड गोल, नॉट द सेकंड गोल. आई डोंट नो व्हाई ही वाज सेलिब्रेटिंग सो मच. चलो फेयर इनफ, वो उसको हार्डली मिल रहा है स्टार्ट, सो ही एक्चुअली गॉट इट एंड ही स्कोर्ड इट, सो फेयर इनफ. लेकिन इट वाज एन ऑफसाइड, और ही गॉट अ येलो कार्ड फॉर रिमूविंग द शर्ट, एंड देन द येलो कार्ड, चलो गोल को चॉक्ड ऑफ कर दिए, लेकिन येलो कार्ड को क्यों नहीं किए? मतलब ये थोड़ा सा, आई एम ऑन रिचार्लिसन साइड और एट द स्पर्स साइड. डोंट यू थिंक, हाँ फॉर वंस, डोंट यू थिंक कि भाई दैट येलो कार्ड आल्सो शुड बी टेकन ऑफ? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन वहां पे? लेट मी नो इन द चैट, सब लोग क्या बोल रहे हैं. ओके, रेड कार्ड टू लैम्पार्ड, रेड कार्ड तो था भैया. ओके, Daylight robbery to Everton, West Ham and Villa. Okay, yes, Villa, उस पर भी बात करेंगे absolutely. सिटी की मैच भी कुछ हुआ था. Yes, absolutely. अंकित भैया, पोल में बारसा क्यों नहीं है? It was amazing match. भाई चार ही ऑप्शंस होते, simple as that. I don't think I can put more than 4 options, इसलिए नहीं था, लेकिन obviously आप कमेंट करिए, आप जो कर लिए तो definitely यार, again हम वो भी कवर करेंगे यार, absolutely कवर करेंगे. We cover end to end football, we always do. Again, much love to join. Again, like कर दीजिए यार people, let's have the likes up, let's have more people in. नहीं, काफी सारे डिस्कशन करना है across Europe, right? If it was Koulibaly, he would have got red and 4-match ban. That was for the Virgil van Dijk tackle. Again, that is what maybe opposition fans think.
United facing Karma for the last 5 years and be the next 5 years as well. Wow, ये क्या हो यार? You Manu and Abhishek Swain having a pun to each other, no problem, banter है. Mendy really needs to improve his keeping, so disappointing यार. उस पर आएंगे यार, मतलब main talking point तो Chelsea and Milan ही है कल का. Rafael Leao still needs to improve. चलो उसमें भी आएंगे definitely संभव. Okay, चलो आ जाते हैं. Looks like people are talking about the Chelsea game, or obviously, by this is the big talking point. But in my view, it was arguably the match of the day. First half was very dross. Second half में बोल रहा हूँ, ठीक है? That's what I mean when I say match of the day. Milan derby arguably also, but this was what, and lot of talking points. A lot of talking points. सबसे पहले तो भाई, let's talk about जो खेला Tuchel ने. Tuchel had lot of options for a change, and touchwood, we had a lot of options, and हमारे पास इतने सारे injuries नहीं थे from the start, ठीक है? But obviously Kante wasn't there. So with him not being there, and with the signings that we made, is that a possibility that हम जाते for the back? I don't know. वो एक मेरे mind में था, and again हम pre-match में discuss कर चुके थे. So I won't go into details. लेकिन the summary of the match मैं share कर सकता हूँ quickly यहाँ पर. और आप लोग बोलिए who was your man of the match. सबसे पहले बोलिए who was your man of the match. Chelsea, West Ham, London derby again. मतलब there is a question mark. Again, website is giving to Thiago Silva. Very good performance. लेकिन was the defense kind of first half में पूरा at fault कि भाई बहुत slow passing कर रहे थे, sideways passing कर रहे थे. In my opinion, yes, Fofana का पहला मैच था, लेकिन I think as much as उनका solid performance था, again with Silva and with Koulibaly, मैं तो almost blame करूंगा भाई कि ये defense और जो defensive midfield जो भी खेल रहे थे ना, those people were kind of doing very very slow passes and side passes in the beginning, and that's why I might have not gone for Thiago Silva. And I'll go for a certain player from the bench, और उस पर डेफिनेटली आएंगे. लेकिन यहाँ पर पकेटा शुरू किए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा परफॉर्मेंस रहा पकेटा का फॉर वेस्ट हैम along with Declan Rice. I agree there absolutely 100%. तो बट या पुलिस अगेंस्ट स्टर्लिंग स्टार्टिंग अप फ्रंट, भगवान जाने ब्रोया स्टार्ट क्यों नहीं किया अगेन. लेकिन अगेन कमिंग टू ओके चिली और सिल्वा, चिली ओके, हावर्ड शाइन अनएक्सपेक्टेडली, या वो भी पूरा दिन देखा यार, मैंने हाइलाइट्स देखा, लेकिन डेफिनेटली कवर करेंगे यार, कोई नहीं. हम लोग हर एक गेम कवर करते हैं यार इन द यूरोपियन राउंड as much as possible. Fofana was brilliant. For his first game you can say he was very good. There was a challenge late in the game जो बहुत अच्छा किए थे. I agree there absolutely. Well, again, this is probably the comment that I was going for. Fair enough. Silva बोल रहे आयुष, interesting. चलो anyway, तो this is what it is. देखिए या मिलान डर्बी पर आएंगे संजीव. तो यस, फर्स्ट हाफ तो ड्रॉस था. सेकंड हाफ में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पहले में कुछ चेंजेस होंगे. मैंने काफी सारा ट्वीट किया था और उस पर भी आएंगे, लेकिन दिस वाज फॉर मी द टॉकिंग पॉइंट. नाउ एंटोनियो वाज ऑलरेडी ऑन अ येलो कार्ड. प्लीज अगेन, इफ एवरीवन बिलीव्स इन द चैट कि दिस इज नॉट अ येलो कार्ड, प्लीज लेट मी नो भाई. ये ऐसा बेसिकली मैं एक सेकंड निकालता हूं भाई, साइड वाला निकालता हूं. ऐसा करके पकड़ के नीचे ढकेल दिया है. इन विच कंट्री, इन विच वर्ल्ड इज दिस नॉट येलो कार्ड? प्लीज बोलिए मुझे. मतलब अगेन आई नो आई एम टेलिंग दिस फर्स्ट, और हम आएंगे डेफिनेटली. आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर, हम भी दूध की दुल्हे इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस वी गॉट. लेकिन if anyone in the chat, I'll wait for all your comments. Please comment. Is this a yellow card? Yes or no बोलिए. Is this a yellow card? Simple as that. मतलब he was already on yellow. Is this not a second yellow? मतलब what will it take? और Thiago Silva was the last man in defense उस समय at this point. तो is it not a yellow card? मतलब in any way in hell. और Premier League did not even discuss about it, did not even show it once. Can you believe that? उन्होंने एक बार दिखाया भी नहीं. The Michael Owens of the world, and I'm sorry to say, man, I understand towards the end we got a decision in our favor. I admit that and I agree that. But उस पर भी थोड़ा debate कर सकते हैं. We'll try and do that. लेकिन is there a debate even here? Please let me know about this, because this was the first instance मैं बोलता हूँ. और yes, people again saying that Reece James should have got a yellow card. Sorry, a red card. No way in hell that was a red card. ठीक है. Reece James ने जो पैर किया था ना, by the way, he was kind of literally उन्होंने टच किया था बस. ये तो literally ढकेल दिया यार, ढकेल के. Please let me know. Anyway, let's move on from this. And after this ये हुआ. Fofana, इसलिए मैं I would not say excellent performance. Again, first game so I'll give him the benefit of doubt. Now Fofana, I know a lot of our defenders probably don't know, but we don't do. हमारा main problem है set pieces. We don't do well.
और इस मोमेंट में डेक्लन राइस डिड वेरी वेल, आई हैव टू से. और उन्होंने जीता कॉर्नर एंड फोफाना काइंड ऑफ कंसीडर्ड द कॉर्नर, और विद द कॉर्नर ऑब्वियसली देयर वाज अ गोल. सिंपल एज दैट, राइट? एंड वेस्ट हैम वर लीडिंग. और उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद वी मेड द सब्स्टिट्यूशंस. ब्रोया केम ऑन एंड हैड एन इम्पैक्ट. ब्रोया हैड एन इम्पैक्ट. और मैं अभी भी पूछता हूं, व्हाई डिड नॉट ब्रोया स्टार्ट? सिंपल एज दैट. वो एक फोकल पॉइंट दिया, वो एक दिया कि हम जो क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहे थे, एक है बंदा वहां पर. और बहुत ही अच्छा किया भाई. जूमा और फेबियांस्की एक्चुअली डिफेंडेड वेल इन दैट मोमेंट, नहीं तो ये गोल होता. इनफैक्ट 2 बार हुआ था ये चीज ब्रोया के साथ. ब्रोया शुड प्ले 90 मिनट्स. रूपा क्या? 100% agree there. If this Broya or Antonio leave red, it would have been 7 bad plus red plus fine. इतना तो नहीं दे बढ़ाई हो यू. बिल्कुल यार, बिल्कुल करेंगे भाई, डेफिनेटली करेंगे. हम हर एक मैच करेंगे as much as possible. भैया प्रेडिक्शंस पर आते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम. किसला यार, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. वो भी करेंगे यार. मतलब अगेन 4 ही ऑप्शंस होते हैं यार. यार आप लोग इतने ये क्यों हो जाते हो भाई? एक एक में नहीं है, मतलब मच लेफ्ट फॉर कमिंग ऑन. लेकिन ठीक है, आप समझा करिए यार, 4 ही ऑप्शंस होते हैं. एंड द फैक्ट दैट when you're talking about a match being exciting, दोनों sides have to do well, right? तो I thought it is probably in the top 5 matches. In the first 4 नहीं था, but आपको लगता है तो ठीक है. आप लोग लगता है बारसा से भी है तो वो मान लेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. टेंशन मत लीजिए यार. मतलब यार no one is hating against any club or match. यार don't assume and misunderstand people. मैं पहले बात बोल रहा हूँ, and this just for not for me, for every content creator. ठीक है? मतलब there are some limitations आप जब content बनाते हो. लेकिन much love यार. Broya is in match fit maybe. No यार, he is match fit. Come on, he should be match fit by now. Come on. I know 2 बार injured थे in the last 2 months, but I still believe that यार काफी दिन हो गया last time injury हुए हुए. Broya can play 9 minutes and should play 90 minutes. Yeah. You said Tuchel is protecting Broya. Again, I didn't say that. I was just asking the panel in the pre-match. But yes, there was a case or argument saying that yes, Tuchel might be protecting Broya, not exposing him for 90 minutes for pressure ban jayega right after signing that contract. But again, having seen the performances now and after seeing that lineup of basically Pulisic and Sterling up front, or the defenders, the midfielders are not confident giving them ball, then have a striker jab unko confidence aayega. That's what I'm saying now after seeing the first half, right? FPL par aate yaar. Then we'll come to FPL surely. But again, people, now this was the moment. This was the moment of the match. मेरे लिए सब बदल गया, सब बदल गया. Of course, Chilwell भी आए थे as a substitute. And look at this. Thiago Silva is right in the middle. So Thiago Silva is right in the middle. And then you have basically Chilwell beginning to make that run. आप देख रहे हो on the top right corner of the screen almost. ठीक है? Look at this angle, man. Look at this angle. Look at that pass. ठीक है? You can argue that उनको जो space दिया गया, क्यों दिया गया, but just look at this. And यहाँ पर देखिए. अच्छा, by the way, हाय यार श्रेय, कैसे हो? मतलब nice to see you as always. मैंने देखा आपका मैसेज. बिग अप भाई, member of Almighty Blues FC. Look at that pass and look at the turn. भाई स्पिन किया लिटरली चिलवेल ने. स्पिनर इसको बोलते स्पिनर. मतलब अगेन आप लोग सब गवाओ यार, आप लोग सब गवाओ. और मुझे मालूम है मुझे कैसे चैट में जवाब आया था. इट माइट बी जस्ट अ फ्यू पीपल, लेकिन दोज फ्यू पीपल अमंग देम आई नो कपल ऑफ देम आर इन द चैट राइट नाउ. मैं यहाँ पर कुछ आपको कुछ गलत बताने नहीं आया हूं, लेकिन फैक्ट है. आपको याद होगा मैंने बोला था, व्हेन वी प्ले अ विंग बैक सिस्टम, I repeat, when we play a wing back system, Chilwell is far needed more than a Kukurea in most of the minutes, in my opinion, because हमारा dependency on wing backs is far more to score goals compared to other teams which play wing backs. ठीक है? Our wing backs are almost like left attacking midfielders, और वहां पर इसीलिए we want Chilwell because in that aspect, in scoring goals, he's better than Kukurea. In all the other aspects, Kukurea might be slightly better than Chilwell. लेकिन in scoring goals, Chilwell is better, and I hope my point is proven. I'm hoping that जो couple of people थे who actually literally told me, आप लोग आके chat में बताइए कि अंकित भैया you were right and give me some credit for once. Hey, let's do that. Come on, I don't claim credit, but I am claiming credit for 100% for sure. Anyway, and look at the calmness, bhai, nutmegging basically Fabianski. Look at the calmness. Just look at the calmness यहाँ पर. Absolutely. Well, okay, I'm not sure what's that coming from Lumanu, but I think he's an excellent defender. But he has his limitations when it comes to basically, as in positioning himself and when it comes to playing the ball out.
Anyway, what's happened to Bahubali? Well, again, it's a new team, it's a new system, everything. So, bhai, everyone is human. He takes some time. That's all I'm saying. लेकिन हाँ, he is a bit too circumspect. जैसे मैंने pre-match में बोला था, Tuchel is maybe are not that open to kind of them trying those long balls easily. लेकिन having said that, Gallagher, in my opinion, had a very average game. Maybe next match में देखना चाहूंगा Gallagher के जगह आएंगे basically Broya. वही रहेगा मेरे लिए because he wasn't having those vertical passes at all. Okay, do you think West Ham deserve the goal? Again, मैंने बता दिया भाई, अगर एंटोनियो का रेड होता ना तो गोल कैसे होता पता नहीं. That's what I'm saying. Clearly red था वो, in my opinion. Second yellow. I prefer coach Kepa over Tuchel. उस पर आएंगे definitely. By look at ChelseavsWestHam, man. Look at the scenes behind. This was a moment, यार बोलते ना Premier League में it gives you those thrills. That is what it is. Premier League thrills, and this is look at ChelseavsWestHam, bhai. I'm really happy for him. Of course, I'm happy for myself also because I was proven right. I don't know. I'm not getting comments यहाँ पर, but again, I'm not here to prove myself wrong. लेकिन I hope I deserve some credit. I've been telling from multiple streams that Chilwell deserves to be there. Chilwell deserves to be there in wing back, but I've not seen any single comment वहाँ पर. Again, मतलब आप लोग criticize मुझे नुक्स सब लोग नहीं. There are a couple of people जो नुक्स निकालते हैं मेरे comments में. I think one of them is that itself. Like I'm not getting that credit. Come on, I think I deserve that credit. Let's be honest, as much as Chilwell does as well. Anyway, this is what even I was when Chilwell scored. By the way, that दिखा दिया भाई. We can make comebacks as well. Not that we did very well. Horrible था first half. ठीक है. And this was the moment. This was the moment. Absolutely. अरे thanks यार गौरव, thanks. अरे भाई again सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम. don't worry, I'm not here to challenge you all, man. I love you all, your family. For me, लेकिन at the end of the day यार sometimes थोड़ा सा bragging rights बनता है, तो वही था मेरा बस 2 मिनट का. Generally I think I'm humble enough. No, don't you think so? Anyway, so man, look at this. Kepa instructing Havertz, और Havertz आने के बाद भी अच्छा नहीं कर रहे थे first few minutes. His positioning was not right. And this is a moment that Kepa ने बुलाया भाई तो चुपचाप आ तू ये सुन ये कर, तब definitely something किया. But anyway, yeah, absolutely you did as well. Okay. नहीं यार ये तो नहीं है definitely, लेकिन manager Kepa 100%. When Rudiger used to play, we played more long balls and vertical ball. Exactly. इसीलिए मैं थोड़ा surprised हूँ with Koulibaly. Why Tuchel is not having that thing with Koulibaly, because he has that in him. In fact, yeah, Bahubali Koulibaly Ashish. I think his impact of coming from the bench, which Kukurea also had during Everton match. Okay, so again, CFC Blues, if you don't agree, it's fair enough. But again, I repeat it. Just check the stats. How many goals Kukurea has scored versus how many goals Chilwell has scored. Be goals per match, etc. Again, both are fantastic. Both are my club's players, and I love them. And so your club's players as well. I'm pretty sure you love them. But the fact is, in a wing back system, जहाँ पर हम depend करते हैं goals पे, and I'm really shocked that still people are coming up with the argument to that. I think there's no two ways about it. When it comes to goals, Chilwell is the better player, in terms of goals. That's what we want. And we are lacking goals at this point in time. That's all I'm saying. Okay, I'm a little triggered as Arsenal game pressure. No, I understand. We'll come to that as well, though, Manu. कोई नहीं होता है. I understand totally what you're going through right now. And okay, चलो मैं इंडिया में रहता हूँ यार. कैसे हो आप? Nice to see you. Do not forget to like the stream अगर आप आए हो और subscribe करिए दोनों channels में. और yes, by the way, we are live on the other channel for India Pakistan as well later. और भाई Havertz actually after Kepa actually did it. He actually did it. मतलब Kepa the manager and Havertz, और उस moment में Broya actually had a moment. Broya played, I think he played in, who was that? Of course, Chilwell, right? And Chilwell again getting an assist. Or there can be an argument Mason Mount रास्ते में थे, लेकिन Mason Mount luckily did not take a touch and left it to Havertz. I'm not saying Mason Mount is good. No, he wasn't. लेकिन luckily did not take a touch. लेकिन वही होता ना, perfect goal which we always try. हो सकता था we would have gone. लेकिन for once we were direct in that moment, and that was what helped. And of course Havertz, yeah, बोलिए यार, again Mason Mount or Havertz like sushing the crowd. This one I would like Havertz to be humble. Yes, of course मैंने खुद ट्वीट किया था काफी और मैं दिखाऊंगा वो, लेकिन don't you think that Havertz should be little bit humble considering कि इतने गंदे परफॉर्मेंसेस हुए Havertz के. और यहाँ पर मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा भाई Havertz, there were some positives in the previous matches.
जो मैंने हाईलाइट किया था वही किया था हैवर्ट्स इस मैच में टुवर्ड्स द एंड. सो होपफुली ही कंटिन्यूज दैट. और बट स्टिल इज ही अ स्टार्टर? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो इज अ स्टार्टर. आप लोग बोलिए व्हाट अबाउट हैवर्ट्स? Okay, what was Silva telling Reece at halftime going to the tunnel, and who was Havertz shushing to? Yeah, exactly. The first part, I'm not sure what it was, Lubanu, exactly. That has not been shared, I believe. Lekin, Havertz shushing to, exactly. He was shushing to the media or the people saying that he shouldn't start, etc. I'm guessing. Lekin, bhai, I believe he was wrong in that. I believe he was wrong. He should have been humble considering that वो हगा है इतने दिन. Lekin overall, bhai, I should also admit that he gets very, very important goals in important moments. Or that is a player that he has been. People only remember the Champions League final goal because the Champions League final था. लेकिन apart from that also there have been many important goals जो उन्हें मारा है. और finishing लेकिन horrible है overall. I would agree that Tuchel should play goalkeeper for us cause Kepa is clear of Tuchel. अरे भाई, Chile is in match fit. Do you think it's true he had full preseason? Well, no, he did not have full preseason, but I think by now he has enough minutes to start. Again, when I say start, I don't mean 90 minutes. I mean that हर मैच में we need to use both. Rather go on the front foot, go with goals with Chilwell, and then get on Kukurea is what I'm suggesting, or play Kukurea left center back, and that's what I'm suggesting in matches where it will be a low block, जहां पर हमें goals चाहिए. Salam Chelsea OG, कैसे हो? Nice to see you. And again, do not forget to hit that like button and of course subscribe to both our channels. Wow, interesting. Interesting. It was a West Ham fans. Okay. Why do people want Tuchel out? Why do people want Tuchel out? यार फर्स्ट हाफ का जो परफॉर्मेंस था ना, इतना बुरा परफॉर्मेंस था. साइडवेज पासिंग, बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिक. तो देयर आर सम एस्पेक्ट्स व्हिच कैन से दैट ओके टुकल अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहा है, यू नो, एज वेल एज वी आर नॉट विनिंग गेम्स इनफ. तो दैट इज द कॉम्बिनेशन व्हिच टेक्स इट्स टोल at some point. लेकिन if you see, there was a video, I don't know, मैं वीडियो दिखा नहीं पाऊंगा because of copyright, लेकिन there was a video where basically Gallagher gets the ball. Gallagher खेल रहा था in that hole in front of Loftus-Cheek and Kovacic, right? So he gets the ball and he takes it back. Tuchel was like, भाई तू सामने जा, कोई है ही नहीं. तो Tuchel, I don't think he's coaching them to play that way. It's just that players are looking at each other and becoming that way. It's almost like contagious. Sideways passing वो हो जाता है. बिल्कुल, it was for haters, not Chelsea fans. Yeah, we need this attitude. Okay, fair enough. And yes, of course, we'll come to the United match as well. Set piece delivery has been really poor. Yes, that's a very good point. भाई, I don't know why शुरू में कुकरिया ले रहे थे, बाद में गैलेगर ले रहे थे. दोनों ही इतना अच्छा नहीं है in my opinion set piece में. मतलब again, I'm not saying that Mason Mount should start. मैं advocate नहीं कर रहा वो. लेकिन in terms of set pieces, I believe Mason Mount, Reece James, and Hakim Ziyech are probably a better set piece takers. I don't know why Kukurea and Gallagher are taking. Simply put, they're not terrible, लेकिन वही है, it's not good enough. हमारे इतने सारे corners थे और एक corner हुआ और second corner था, I think West Ham ने गोल मार दिया. Look about it. That is what we knew. We need to stop sideways passing and try to play through middle. बिल्कुल in between the lines कोई था ही नहीं यार. ना तो anyone making runs, not any midfielder wanting to pass. A bit of both. Or yes, this was a talking point. Obviously, this was the main talking point of the game. So, Mr. David Moyes, much respect, bro. David Moyes को क्या बोलोगे यार आप इस moment में? David Moyes thinks that the goalkeeper dives once he loses the ball and he's actually faking an injury. How many of you will agree with this? Do you agree with, you know what you say, Mendy actually faking that particular foul? आप बोलिए. Again, while I agree that, you know, Mendy did overreact, I have to admit that. वो मैं झूठ नहीं बोल सकता. मेंडी को इतनी जोर से नहीं लगी थी. यस, बाद में टुकल का इंटरव्यू हुआ था. टुकल ने बोला कि हो सकता है कि मेंडी विल बी आउट फॉर द जाग्रेब गेम, जो हम प्रीव्यू करने वाले हैं कल along with other games of UCL, right? लेकिन at the same time, man, there is a moment where it's a clear foul. I don't know in which world is that not a foul? Please tell me. Matlab, this is a clear foul, people. Matlab, again, do you agree or not is the foul? Yes, he overreacted, but the letter of law kya hai? Is that a foul or not? It is a foul in the box. Simple as that. So, bhai, agar wo maar raha hai laat usko, whether be it trailing leg or be it, you know, as in leading leg, it is a foul. हमने हगा था उस मोमेंट में डिफेंस में, 100% अग्री. ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट. और ये भी अग्री करता हूं भाई, मेंडी ओवर रिएक्टेड. वो ज्यादा एक्टिंग शुरू में लगा था उसको इम्पैक्ट, लेकिन वो कंटिन्यू किया, थोड़ा एक्टिंग किया. आई वुड अग्री देयर, बट इट इज अ फाउल. दैट इज द लेटर ऑफ लॉ एंड दैट इज व्हाट इट वाज. एनीवे,
Let's see आप लोग क्या बोल रहे हैं. And yes, we are coming to other games as well, people. Again, we are doing game by game. I don't want to kind of jump and make everything a चौचो बात. पता नहीं आप लोगों को पता क्या होता है चौचो बात, लेकिन मतलब खिचड़ी नहीं बनाना मुझे, तो इसलिए मैं आराम से आऊंगा एक एक मैच में, इसलिए हम लाइव कर रहे हैं. मच लव टू एवरीवन कमिंग. Hopefully you be there till the end. Have people become a lot more impatient and reactionary lately? A few bad results and they want the manager to be sacked or something. Not saying it's happening with Tuchel here, but just in general. बिल्कुल सहज वही है. एंड मे बी यार बोर्नमथ ने जो किया है विद बेसिकली स्कॉट पार्कर इज अ बैड एग्जांपल इन माय ओपिनियन. नॉट दैट चेल्सी हैजंट. डेविड डेरेन बहुत ही अलग ही लेवल पे आज. कोई नहीं, ही वाजंट फेकिंग बट इट शुड हैव बीन अ गोल. ओके, इफ इट शुड हैव बीन अ गोल, फाइन. ही वाजंट फेकिंग. क्यों भाई? मतलब आप बेसिकली अब चेल्सी के साथ इन द बॉक्स जब दूसरा ऑपोजिशन वाला बाल खींचता है, ठीक है, बाल खींचता है, that basically you have admitted, when I say you, the entire media has admitted and the referee has admitted in the post match कि भाई वो गलती किया, वो फाउल होना चाहिए था. ठीक है, और यहां पर बिकॉज वो लात से मार रहा है तो वो बेसिकली फाउल नहीं है क्या? मतलब आई डोंट गेट इट. I don't know, it's about basically a slight touch or basically what not. A foul is a foul. मतलब आप प्लीज लेट मी नो. यस आई नो गोलकीपर आर प्रोटेक्टेड, लेकिन जस्ट माय ओपिनियन. आप लोग बोलिए, मे बी वी कैन अग्री टू डिसएग्री. आई थिंक मेंडी वाज ओवर रिएक्टिंग, दैट वाज नॉट अ फाउल. आई थिंक इट्स माय ओपिनियन. ओके, फेयर इनफ. ही वाज ओवर रिएक्टिंग, आई अग्री, बट इट वाज नॉट अ फाउल. आई डोंट अग्री. दैट्स माय ओपिनियन संजीव, लेकिन मच लव टू यू. नॉट क्लियर 50-50 आई थिंक. हाँ चलो, तो 50-50 था. तो मे बी द फैक्ट कि पहले गोल दिया गया था, it was not clear and obvious, so there is an argument that the goal should have stood. Okay, fine. I take that argument at least. Again, Siddharth, we'll come to it. Like I'm saying, we'll come to it. I don't want to kind of jump topics every second. So I'm hoping you can respect that. But I respect it totally, bro. As in, thanks for coming on. I saw Mendy's eyes and he saw his mistake and started the acting. Ankit, yeah, I have admitted that acting किया है उसने, लेकिन भाई इम्पैक्ट है, वो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्लियर इम्पैक्ट है. उसका foot is hitting Mendy's shoulder. Simple as that. I just disagree. It was not intentional. Well, let's see. It was a normal collision. But remember that it's not for Chelsea. It's for football generally, which I don't agree with. Like, the fact is, it cannot be a normal collision between a goalkeeper and a player. If it's a player and a player, it can be called a normal collision, not when a goalkeeper is there. I don't agree with the rules. Lekin, if that is what other teams get, why not Chelsea? That's my opinion. Anyway, आप लोग अलग बोल सकते हो, totally fair. We can always agree to disagree. It's no problem at all. Tension नहीं उसका. लेकिन again, मैं तो यही बोलूंगा, the way they have put forward again, who are people who have joined late. मैंने एंटोनियो वाला भी दिखाया था, याद रखिए. एंटोनियो should have got a red card before that, as in goal. One of those gray areas, no matter which way the referee decided, there was going to be debate on this. चलो, fair enough. अब the Chelsea प्रकाश बिल्कुल did Pulisic play terrible. लेकिन Pulisic के अगेन आप लोग बोलोगे अब हमेशा Pulisic को डिफेंड करता है. The fact is, कल भी यार he wasn't playing in his position. He was playing in a two up front. Is he a striker? No. He is really a left winger. Play him in a left winger. भाई ये म्यूजिक बहुत चल रहा है बाहर. I hope ये कॉपीराइट नहीं लग रहा है. मेरी गलती नहीं यार, YouTube वालों. आई होप ये नॉइस कैंसलेशन हो जाए. लेकिन यहाँ पर अभी तक गणपति के सेलिब्रेशन चल रहे, तो बहुत म्यूजिक चल रहा है मेरे बाहर. कोई नहीं. आई थिंक इट्स 50-50 कैन गो बोथ वे. चलो, विल मूव ऑन फ्रॉम दिस देन. और ये अच्छा, ये मैं दिखाना चाहता हूँ. ओके, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग. डबल स्टैंडर्ड्स है. स्काई स्पोर्ट्स अच्छा सेम मंथ में होता है, ऑलमोस्ट विद इन वन मंथ. ठीक है, ये है उनका हेडलाइन. चेल्सीज कमबैक सेव्ड बाय कंट्रोवर्शियल वीआर. चलो, फेयर इनफ. ओके, आई डोंट अग्री, बट चलो एक हाइपोथेटिकली लेट मी अग्री विद दैट. ठीक है, और वही चीज हुआ था जब वो बाल खींचा था. बाल खींचना तो अलाउड है ना, बाल लिटरली खींचा था. स्पर्स स्नैच ड्रामेटिक लेट इक्वलाइजर. वहां पर कुछ नहीं, वीआर घंटा है ना वहां पर. प्लीज लेट मी नो, इज दैट नॉट क्लियर? इट्स क्लियर दैट इट्स नॉट वंस अगेन. मैं लिटरली हर 2-3 महीने में ऐसा एक होता है. Is that for clear? I know that you have won. I shouldn't be talking about negatives. लेकिन don't you think it's a clear agenda? It's a clear agenda for me. And why मैं दिखाता हूँ यहाँ पर. मैंने माइकल ओवन को किया, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा I know I might get carried away. And again, हम आएंगे दूसरे मैचेस पे. Absolutely हर एक मैच हम डिस्कस करेंगे in Europe as much as possible. माइकल ओवन ने बोला है, the decision to rule out West Ham goal is an absolute shocker. The goalkeeper dives at his feet. What's he meant to do? चलो ठीक है, मान जाते. And I responded to him. Bhai, I respect everything. But what about that Antonio, जो shockingly
WWF खेलता है थियागो सिल्वा को और नीचे गिरा देता, उसको कुछ नहीं मिलता, येलो भी नहीं मिलता है. Just think about it. Same thing. I think let me remove this banner. एंटोनियो खुद बोल रहा है, you put you all in pitch and for it to be decided like that just doesn't feel right. मैंने उसको भी बोला भाई आप किंग कुंफू खेल रहे हो, वो अलाउड है. मतलब he did a very good performance, I have to say overall. मतलब having almost what 25 to 30% possession in the first 1 hour, फिर भी उन्होंने अच्छा किया. I would agree there. But here you cannot play kung fu, bro. That is what my point is. आप लोग agree करते हो कि नहीं? मतलब again people saying that अरे डेरेन थैंक्स यार भैया, आरएलसी प्लेड बेटर देन जॉर्जिया. आई थिंक बाय द वे आरएलसी बहुत अच्छे खेले यार. इन माय ओपिनियन आरएलसी वाज, आई नो काफी लोग ट्विटर में आरएलसी के लिए गाली दे रहे थे, आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक ही वाज अ बेस्ट मिडफील्डर बाय फार. कोवाचिच से भी बेटर. कोवाचिच भी अच्छे खेले, लेकिन अगेन ही वाजंट 100% फिट दिख रहा था. जॉर्जिनियो आते ही भाई ही लॉस्ट पोजीशन. So Jorginho like, right, वो पेस और स्ट्रेंथ के he cannot kind of bear that. लेकिन again shout out है डेरेन को भाई, ऑलमाइटी फैन अपने. थैंक्स डेरेन फॉर सुपर चैट. एब्सोल्युटली. एंटोनियो ने मस्त रेसलिंग किया बट नो कार्ड्स. वही है एग्जैक्टली. अगेन डेक्लन राइस बीइंग सॉल्टी. ऐसे भी राइस के साथ सॉल्ट अच्छा लगता है मुझे, तो आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं. राइस के साथ सॉल्ट अच्छा लगता है, तो दैट इज व्हाट डेक्लन राइस वाज, राइट. सेम चीज आई हैव, मैं तो बिंदास जाके बोला हूं यार, सिंपल एज दैट. और अगेन I know that as a player, as a West Ham fan अगर होता तो I would have felt the same thing. I don't disagree there. But you have to get all the facts right. You cannot just say one side of the coin. That is all I'm saying. ठीक है. और भाई आप लोग जीत गए हो भाई. वेस्ट हैम को दे देते मैच. कैसे जीते हो? उसके बाद जो हुआ ना, जब कॉर्ने ने जो गोल मारा, जो डिसअलाउ हुआ, and Declan Rice and Emerson had the audacity to kick that Chelsea flag. Bros, Declan Rice और Emerson, Bro, Emerson, you won the Champions League with Chelsea without even playing. Okay, आपको मेडल मिला है चेल्सी में. Okay, आपको इतना सैलरी दिया चेल्सी ने. आप you had the audacity to kick that blue flag. How did you do that? And Declan Rice, bro, you have grown up in Chelsea. Is that for real? Really, man, this is like hats off, man. मतलब hats off to our players to keep the cool after what happened there. It's too much in my opinion. But anyway, I know that I'm getting a bit emotional, but again, it had to be, bro. I think people see one side of the coin. If you actually see every minute of Chelsea, maybe you'll understand why these feelings are coming out. Anyway, when referees turn against Chelsea, everyone says it's fair. But when referee gives a decision, exactly, Siddharth, that's my point. That is my point. It doesn't even apply when Chelsea is into the picture. Why is the headline that? It was a superb comeback. It was a pathetic performance by Chelsea in the first half. Pathetic. But it was a superb comeback. For once, we have shown character. Why aren't anyone talking about the character that Chelsea showed? When Kukurea was pulled down, I was shocked how referee didn't. Exactly. Yeah. So basically, या तो दोनों को दो या तो दोनों को नहीं दो. Exactly. तो यहाँ नहीं दिया तो fair है. In my opinion, simple as that. Among all penalties, there's nobody from Chelsea. Yeah, एक होया है. मतलब ESPN में है एक बंदा. ठीक है. Again, he speaks utter trash. एक और बंदा जो I know Frank Labeouf, I still kind of respect him. लेकिन I think the other guy, I don't even want to take his name. ठीक है. Because he did utter shit he did in Chelsea. That is why he doesn't like Chelsea. I'm kind of surprised that basically, there is another Chelsea ex-manager come player, Hoddle, who was there many times. लेकिन the fact is he played for Tottenham more, तो उनका बदल गया यार. उनका जो soft bias है ना, soft bias. Anyway, छोटे बच्चे बिल्कुल यार. है यार, क्लियर है. अगेन ऑपोजिशन may not agree, but क्लियर है. There's no two ways about it. No, I'm not saying that we deserve to be the all-time best team or something like that. मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा हूं अपनी टीम को, लेकिन जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है उस समय में we need the credit. ऐसा क्यों होता है कि भाई एकदम एक्सट्रीम हो जाते हो आप लोग. डेक्लन राइस ट्वीट ऑल्सो, या बिल्कुल वो भी दिखाया मैंने एकदम. RLC played very well, exactly. Emerson kicking, boy. I hope you saw my reaction to that, Gaurav. Why Messi follow Chelsea? Wow. Why? Because Chelsea is a decent club, simple as that. And I'm sure Chelsea also follows Messi, I'm guessing. That's why I'm out angry at him. Well, I was actually surprised that it didn't go overboard. मुझे तो लग रहा था भाई लड़ाई हो जाएगी प्रॉपर यहाँ पर. मैंने से लड़ाई, I was talking about this. I don't encourage that, definitely. I don't mean that. लेकिन भाई, how they kept that cool, you have to give them the credit.
हाँ, अरे हाँ, मार्क फरेरा मैंने देखा था यार, कैसे हो, नाइस एंड अगेन बिग शाउट आउट यार, ग्रीन टफ भी है, इनफैक्ट एंटायर फुटबॉलिंग कम्युनिटी आई लव इट, बट ग्रीन टफ has been one of the channels which I have seen, from I know years, man. And for me, I like the channel as well. Of course, our bro as well, Chelsea bro. It had to be exactly. By the way, I'm happy Chelsea won. It's their fault. By the way, we are coming to other matches as well. Don't think यहाँ पर मैं आया हूँ Chelsea के लिए rant करने के लिए, just because we got that unfair kind of as a no credit. We are not getting any credit for that win. I don't know why. From the last 24 hours almost, I'm hearing on every channel there, every channel, everything. Lucky Chelsea, yeah, whoa. Really, man, really. Anyway, um, exactly. I shouldn't be saying it. Then, but वो सच है वो. Anyway, there's nobody from Chelsea among all pundits. Yeah, I'm sorry to say, but yesterday it was very unfair on West Ham part. अरे दिव्यांशु कैसे हो भाई? दिव्यांशु आपने मिस कर दिया है पहला पार्ट. I guess you joined late. और मैंने पहले हाफ का भी पहले 1 hour का भी I have shown a couple of instances. Please go back and watch the stream and then come and tell me whether it was totally unfair on Chelsea or not. Because मैंने ट्वीट भी किया उसके बारे में. I did show about that. मार्टिन ये क्या हो गया भाई? कोई नहीं, मैं supposedly he's injured, लेकिन Dinamo Zagreb है I think Tuesday night को we should be fine with Kepa. I am kind of confident. और वो भी आप लोग बोलिए, is it time? Yes, I'm not convinced with Mendy. उनका पहला गोल में भी Mendy ने फ्लैप किया ऐसे और strong रिस्ट नहीं यूज किया. I don't know why. So you can tell me that first goal was a mistake of Fofana and Mendy for me. Do you think that basically Mendy को change करना चाहिए anyway? He's too weak. Yeah, that's the point. Thanks. How are you? And of course, again, we'll be discussing the Milan derby as well next. So don't go away anywhere. We started attack on the 81st. Yeah, and that's the thing. That's the main problem with Chelsea. That is the main problem. Why are we reactive and why aren't we proactive? That's what I'm saying. Where was this in the Spurs match? Exactly. Yeah, bilkul, man, bilkul, Abhishek. I hear you absolutely. Very lucky. Arey, kaise ho Messi? Again, very lucky. Again, people joining late. I would again request you. That is the whole reason of me coming out, showing the pictures, actually approving it what I'm talking. And again, I have shown what has happened with Chelsea in the recent past, and that is why I'm not here to defend Chelsea, but I'm here also to talk about basically both sides of the coin. So I have put all the points about this match, and of course, year ka generally bhi bhai. Hage और भी matches के हम बात करेंगे. Just wait and watch. Chelsea head scout, he's gone. I heard that. Bilkul, head scout is gone. Again, I did talk about Green Turf and big up. Bhai, he has just covered that news. I saw that as well. भैया हम 2014 में मेसी को साइन ही करने वाले थे, but his father said no. यार पता ही है, we know it. Messi has been basically, we have got 2 chances in fact. जब even last year when he went to PSG, I think Chelsea and Man City दोनों ही बात की थी, as well as 2013-14 में we spoke to both Messi and Ronaldo, लेकिन दोनों ही नहीं हुए थे absolutely. और again Lucy, just to kind of share with you, यार मैं Chelsea को 2000 से देख रहा हूँ यार, मैं देख रहा हूँ मतलब मैं पागल वाला फैन हूँ, तो मैं I can live Chelsea, that is kind of fan is it. So I'm like kind of followed literally everything they've done. Yes, I don't remember everything, लेकिन of course try and test me, I would say, just joking. But anyway, we can't do anything against low block teams and they attack us on counter happened. Yeah. Some fans said Kukurea should have cut his hair for Romero. Bilkul. But they had the audacity for people to actually make jokes out of his hair. Really? Is that what it is? Good afternoon, Ankit. Kaise ho? Well, I don't agree about Pulisic be showing those things. He can do much more. I genuinely believe that Pulisic can do much more. उस पर आएंगे sports updates absolutely. I'm getting so angry. चले यार, मतलब हो गया, अब तो जीत गए, टेंशन नहीं है. Xhaka stepped on Kovacic and मतलब मैं तो पूरा एक स्ट्रीम बनाते हैं ना, चेल्सी एजेंडा वाला ही स्ट्रीम करते हैं यार अभिषेक दिन. आई नो, मतलब यहाँ हम प्रूव करने के लिए बैठे नहीं है. आई नो दैट वी हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स, लेकिन द फैक्ट इज दैट व्हाई इज माय क्वेश्चन. दैट्स ऑल. इट कंटिन्यूज एंड अगर हम एडमिट करते हैं वी आर शिट, हम शिट फुटबॉल खेलते हैं. आई एम एडमिटिंग डेफिनेटली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी फुटबॉल इज नॉट जस्ट सेक्सी फुटबॉल. ट्रस्ट मी ऑन दैट. मैंने काफी बार बोला आई लव दैट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दैट, लेकिन फुटबॉल हैज 2 एस्पेक्ट्स टू इट. And that resilience is what I became a Chelsea fan for back in the day. I'm just saying you. Retro kit collection. Arey, thanks, yeah, Prithvi. Okay, Kepa has to start. Oh, Kepa has to start. Bol rahe Gaurav. Okay, let's see again. Why so serious? I'm not sure about that. I'll come back to it. Crystal Palace robbed Newcastle. Well,
हाँ ये भी हुआ था भाई। ये क्रिस्टल पैलेस न्यूकासल की बात कर लेते थोड़ा सा भाई, क्या लगता है इसमें 0-0 हुआ आई थिंक इन द एंड, लेकिन मतलब आई डोंट नो डोंट यू थिंक, मतलब मैं वहां वो रिप्ले 2-3 बार देखा, आई कुडंट फाइंड अ पिक्चर जो मैं दिखा सकता हूं आप लोग को, लेकिन wasn't basically that a foul? I think it was correctly given. Again, maybe I'm disagree कर सकते हो, लेकिन clearly बंदा गोलकीपर को जाके मारा है. There is an argument that goalkeeper went to the Newcastle player and hit him, but I thought it's the other way around, or which was what it was given. So I don't know why. मैंने 2-3 बार देखा वो रिप्ले जानबूझ के कि यार सच में वो गलत डिसीजन था कि नहीं था, लेकिन आई फील दैट अगेन मे बी आई एम प्रोटेक्टिंग गोलकीपर टू मच म्यूल से, लेकिन मुझे लग रहा है ना उस मोमेंट में जो विलॉक जो है, विलॉक जाकर ऑलमोस्ट नी से मारे भाई गोलकीपर को क्रिस्टल पैलेस के. हाँ इट इज व्हाट इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ गोलकीपर्स, लेकिन आई फील दैट प्रॉब्ली benefit doubt has gone to goalkeeper, which is not wrong totally in my opinion. Thoda sa debatable at best. Okay. Chomini creative as well as technically sharp. Yes, by the way, we are coming to other leagues as well. Absolutely. Premier League as a whole has some of the most incompetent refs. 100% agree. Worst referees. इसीलिए भाई दिव्यांशु आप देखते हो ना यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में प्रीमियर लीग रेफरीज गायब. गायब मूवी देखी है, गायब हो जाते हैं भाई, लिटरली गायब हो जाते हैं. Talking about movies, man, as in, I know थोड़ा सा off topic है. I was watching this movie Runway 34 yesterday यार, मतलब क्या मजा आया यार मुझे, पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं भाई, बहुत मजा आया मुझे तो, इसलिए मैंने लाइव रिव्यू नहीं किया, मैं आराम से आई एम लाइक ओके फाइन, मिलान जीत गई, चेल्सी जीत गई, मूवी देखते हैं. तो वॉच रनवे 34 काफी अच्छा लगा. आई डोंट नो आप लोगों को कैसे लगा, बाय द वे दे नॉट माय स्पॉन्सर, आई एम जस्ट सेइंग इट, भाई मूवी फ्रीक भी हूं. एवरीवन स्पीक्स विदाउट सीइंग रियलिटी, विदाउट सीइंग द टोटल फैक्ट्स 100%, बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल ना देयर इन. आप देखिए अगर मैं एक चेल्सी फैन हूं, मैं एक मिलान फैन हूं, ठीक है, मैं चेल्सी और मिलान के मैचेस हर एक सेकंड मैच देखूंगा, दैट्स बाय डिफॉल्ट. और उसी समय अगर दूसरा मैच आ रहा है तो आई वुड रादर प्रेफर वाचिंग मिलान और चेल्सी, यू नो व्हाट आई मीन. और उस समय बेसिकली मैन सिटी के फैंस मैन सिटी का मैच देखेंगे, लिवरपूल के फैंस लिवरपूल के मैच देखेंगे, और अगर बैक टू बैक है तो विल काइंड ऑफ अगेन वी माइट स्विच चैनल्स, वो करते हैं, थोड़ा सा वो हो जाता है ना कभी कभी, कोई नहीं. एनीवे काफी सारे है प्लेयर्स एक्टिंग स्किल वन इज द मैच, ऑल ओवर चेल्सी फैन नो दैट, बट व्हाट इज द एजेंडा अगेंस्ट अस. देखो अभिषेक भाई सच बोल रहे, एकदम सच बोल रहे, और मैंने भी बोला एक्टिंग किया, बंदे ने एक्टिंग किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अ फाउल इज अ फाउल. व्हाई इट इज a foul against us and not against others in other matches, और वो इतना मीडिया अटेंशन नहीं मिलता. और एंटोनियो का क्या भाई, एंटोनियो का मतलब लिटरली आप मेंशन भी नहीं कर रहे हो. एंड आई वॉच मल्टीपल मल्टीपल चैनल्स देखा. आई नो मैं काफी बात कर रहा हूँ चेल्सी की, बट अगेन विल मूव ऑन हियर. या आई अंडरस्टैंड टोटली, बट कोई नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच. बाय द वे इंडिया पाकिस्तान भी है ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, हम वॉच अलॉन्ग करेंगे होपफुली दोनों का साथ में. डोंट फॉरगेट टू लाइक, या बिल्कुल यार, अगेन लाइक एंड आई होप अभी तक लाइक्स बढ़ गए यार, 150 टारगेट अपना, 150 लाइक्स हो गए ना आराम से. नहीं Richarlison dies so much yet no one speaks why, because it's Chelsea. Lumanu, okay, कोई नहीं agenda stream OP. Oh my god. अरे कैसे हो भाई, कैसे हो, कैसे हो. यस भाई हम यार लिवरपूल भी फॉर अ चेंज शिट फुटबॉल, अगेन रिस्पेक्ट टू साहिद फॉर सेइंग दैट, लेकिन वही है शायद आपने मिस कर दिया शुरू में, हम लिवरपूल एवर्टन के बारे में बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन वी आर कमिंग टू अदर गेम्स एज वेल. एंड on the move हुआ था, it was moment, but maybe VAR given in favor goalkeeper, but it wasn't a foul. Okay, चलो मतलब that's a right way of putting it. Again very unlucky, surely वो सब चीज नहीं था, it was थोड़ा gray area था. If Rashford goal against Liverpool stood, then Lukaku goal also Liverpool should have stood. Exactly. Again we can do that stream अलग से यार. I remember that. बिल्कुल. I watched it yesterday too. चलो. Nice. I just wanted to make थोड़ा सा point वहां पर. No one hates them. Nobody literally cares if the they win the Premier League. Everyone is fine seeing them win Premier League. Oh, भाई साहब. Okay. नहीं यार, मैं बोलता हूँ जस्ट, मैं तो क्या करता था ना, मैं देखता था ऑल द नाइस मोमेंट्स ऑफ चेल्सी, जाकर देख लो, मतलब वी हैव हैड सो मच ग्लोरी यार इन द पास्ट, देख लो आप जाकर देख लो, या तो बेसिकली मेरे जैसे मूवी देख लो. डू दैट, सिंपल एज दैट. हेलो टू तन्मय एज वेल, मच लव. बट अगेन लेट्स मूव ऑन. या ला लीगा आल्सो हैज दैट, और वहां पर भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है, डेफिनेटली है, no two ways about it, but we have to move on यार, come on, we have to move on. I know हम काफी बात कर लिए चेल्सी की, and as well as we have spoken about Tottenham की मैच as well as Liverpool की मैच, but I think yes we'll come back to Premier League. लेकिन भाई I think one of the probably the match, सच में बोलूं ना, I know maybe as a first मैं चेल्सी fan हूं compared to other clubs, right?
मैं बोलूंगा द मैच ऑफ द डे विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। सब लोग कौन सा मैच था, कम ऑन बोल दीजिए, कौन सा मैच था जो प्रोबेबली वाज इजीली द प्रॉब्ली नहीं इजीली द मैच ऑफ द डे। सच सच में इट वाज लाइक वाओ, मजा आ गया यार मैच देखकर, मतलब दैट वाज, मतलब एक होता है ना स्ट्रेस बस्टर, वो था ये मैच। और कौन सा मैच के बारे में बात करूं, एनीवन द चैट बोलिए, which was that match? Come on, it has to be this again. Maybe you will say that maybe because I also support Milan, you're telling nahi yaar, मतलब you actually, if you watch the match minute by minute, मतलब this match gave goosebumps, सच में बोल रहा हूं मैं, this match gave goosebumps। एंड ड्रामा वहां पर भी रेफरी आए थे, बाय द वे रेफरी का आएगा उसमें भी, लेकिन नॉट जस्ट ड्रामा, द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल भी फॉर अ चेंज इन मिलान डार्बी। मे बी आई वाज रिमेम्बरिंग दोज, वही अर्ली 2000s और मिड 2000s में जो होता था भाई मिलान डार्बी, क्या हुआ करता था यार। I was almost remembering that because the quality was there, especially AC Milan in that first hour. Wow, मतलब I was by Sandro Tonali। आई नो काफी लोग बोल रहे हैं रफाइल लियाओ ऑल दोस थिंग्स बोलेंगे। सैंड्रो टोनाली देखा किसी ने हर एक मिनट जो खेला भाई, क्या टर्न्स, क्या टच है भाई बॉल का, क्या पास, मजा आ गया यार, एकदम मजा आ गया सैंड्रो टोनाली को देखकर। बट एनीवे मेरे लिए लिवरपूल एवर्टन ओके, मर्सीसाइड डर्बी अगेन, हमने काफी बात कर लिया उसके बारे में ऑलरेडी। बट एसी मिलान इंटर मिलान हैज टू बी फॉर मी इन माय ओपिनियन, एज मच एज बिकॉज इट हैड गोल्स, इट हैड ड्रामा, इट हैड क्वालिटी। और बेसिकली वही है, एजी मोमेंट्स भी थे, रेफरी का भी बोल दो, हर चीज था यार उस मैच में। और ऑफ कोर्स डार्बी तो था ही, खैर मतलब एटमॉस्फेयर वाज क्रेजी एज वेल। You have to give credit to San Siro, yeah, absolutely. Ramsey was so good, and I'll come to that match as well. City के match में when we are talking again Premier League, Derby, Rafael Leao, yeah, I agree 100%. Premier League it was Everton, Liverpool. Gavi, what a player, wow, उस पर भी आएंगे absolutely विश्वास। Okay, the way Inter played was brilliant. They have very fast forwards, and if they play this way, they can be very dangerous for both Bayern and Barca and UCL. Okay, Divyanshu, लेकिन मैं बोलूंगा they almost scored against the run of play. Don't you agree with that? And yes, by the way, I can see people dropping भाई, इतना भी बुरा नहीं है सेरिया, इतना भी बुरा नहीं मिलान डार्बी। गिव देम अ चांस, जैसे बोलता गिव अस अ चांस ऑन द चैनल। आप देखिए भाई, आप देखिए, आप अगर देखोगे तो यू विल अग्री विद मी 100%। फॉलो इट फॉर अ व्हाइल, गिव इट अ चांस। मिलान डार्बी सच में बहुत अच्छी थी, वर्थ टॉकिंग अबाउट। बट ऑल्सो वी आर कमिंग टू ला लीगा, वी आर कमिंग टू प्रीमियर लीग एंड लीगा, वो भी करेंगे भाई, बात करेंगे, सो प्लीज डोंट ड्रॉप ऑफ, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड अभी, ठीक है। लेकिन हाँ, आई एम सेइंग दैट इंटर ने जो ब्रोजोविच का गोल था वहां था मिस्टेक मिलान का। लेकिन आई हैव टू सी द गाय हु टुक द गेम बाय द स्कफ ऑफ द नेक। यस, बाय द स्कफ ऑफ द नेक मैं बोल रहा हूं। सैंड्रो टोनाली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी थे, बट समवन हु एक्चुअली फिनिश्ड। और ये मोमेंट था भाई, हाउ हाउ डज ही चेंज ऑफ पेस करता है भाई, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी करता है, ड्रॉप द शोल्डर एंड देन ही स्कोर बूम। भाई दिस गाय, मतलब ट्रस्ट मी, अगर ये 150 मिलियन मांग रहे हैं, कम नहीं है, रादर ज्यादा नहीं है। दिस गाय, ट्रस्ट मी, हैज टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन यूरोप, सिंपल एज दैट। आई नो राइट नाउ हम बात करेंगे अबाउट हालैंड, वी स्पीक अबाउट एम्बापे, ऑफ कोर्स मेसी इज ऑलवेज बीन देयर, नॉट टेकिंग दैट लेवल, बट अगेन समवन हु कैन गेट टू दैट लेवल, एक पोटेंशियल जो बोलते हैं ना, दिस इज द गाय। रफाइल लियाओ इसका नाम है, फॉर पीपल बाय चांस आपको नहीं मालूम है, बट सैंड्रो टोनाली को भी है शाउट आउट, जस्ट उसको ज्यादा कंसिस्टेंट करना है। ये बंदा जो है रफाइल लियाओ, ही इज कंसिस्टेंट इन माय ओपिनियन, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल, एंड नॉट जस्ट हिम स्कोरिंग अ गोल, एंड देन व्हाट इज इट, for whatever reason inter defense cannot even manage, they can't even handle this guy। और ये बंदा, not Rafael Leao I'm talking about, anyone whom am I talking, जो सेकंड गोल मारा भाई मिलान ने, बढ़िया गोल था। अगेन रफाइल लियाओ का ही असिस्ट था, एब्सोल्युटली रफाइल लियाओ का ही असिस्ट था, बट आई थिंक the guy that obviously deserves that shout out, because for me वो as a footballer generally इसको credit नहीं मिलती। I don't know, again for whatever reason, even in Chelsea we did not respect as much, the fans did, लेकिन I think the board probably did not, और ThomasTuchel probably should have taken a chance with them staying in my opinion। हाँ डिफरेंटली खेलते हैं, बट वो ये प्लान भी देते हैं भाई, मिलान के ही इज अ फ्रंट मैन। Zlatan is injured for a long while, और Zlatan का करियर ऐसे भी खत्म होने वाला है। Giroud at this age is able to be in that box time in time out or finish better. By the way, he probably should have scored 2-3 goals कम से कम, लेकिन the guy is that good, trust me, that he's underrated in my opinion। Yes, Serie है, but again even he's done that in Premier League as well as Champions League, आप देखे ही हो। Anyway, okay, इंटर डिफेंस में काफी एक्सपोज हो जाती है भाई। डिफ्राई was frying। I don't know what was he doing, very bad match by डिफ्राई।
दूसरी बार हो रहा है मिलान डाबी में, वो हग रहा है प्रॉपर. Inter are a settled team and have a certain game style and they can win versus they can, but again Lukaku will be a miss. यार आर्ग्यूबली मैं बोलूं, आर्ग्यूबली जेको ने जो आकर इंपैक्ट किया ना गेम को, वाओ व्हाट एन इंपैक्ट. Arguably, I would say that Dzeko and Lautaro Martinez are probably in better form. I'm saying form. I'm not saying better players, but they are in better form. So yes, they can do on the day. What was the defending on second goal from Leao? Horrific. बिल्कुल यार, defending was absolutely shambles. ओके, यहाँ पर ये क्या है भाई? राशफोर्ड गोल ऑन साइड अगेंस्ट अस एंड कुटिन्यो गोल इज ऑफ साइड यस्टरडे. हाँ, उस पर भी आएंगे शायद, एब्सोल्युटली उस पर भी आएंगे, हम बात करेंगे. अगेन वी आर कमिंग मैच बाय मैच, राइट? ओके, या दिस पॉइंट भाई अभिषेक, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. भाई जेको ने जो इंपैक्ट किया उसके बाद वन मैन नहीं बोलूंगा, चलो डिफेंस ऑफ एसी मिलान हाँ थोड़ा सा इट वाज टोटली इन टैटर्स, लेकिन आई थिंक टोमोरी कुलुलू मूविंग टू राइट बैक एट अ पॉइंट, भाई काफी इंप्रूवमेंट हुई थी टुवर्ड्स द एंड. लेकिन द गाय हु एक्चुअली केप्ट देम इन द गेम रियली वाज नॉट अ राफेल लियाओ और अ जिरू, इट वाज मैग्नियन इज द पर्सन. भाई मैं बोल रहा हूं अगेन, थोड़ा क्रेडिट हमें दे दीजिए यार अभिषेक, अंकित को थोड़ा सा. आप मुझे देखो तो मैं हर एक स्ट्रीम में, हर एक चैनल में, मेरे चैनल में तो बोलता ही हो खैर एकदम ब्रोकन रिकॉर्ड जैसे, लेकिन हर एक स्ट्रीम में, हर एक चैनल में मैं बोल रहा हूँ, नॉट फ्रॉम नाउ व्हेन मैग्नियन फाइनली पीपल नो, बट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सीजन में बोल रहा हूँ. आई होप मुझे थोड़ा लोग समझे कि भाई मैं बंदा थोड़ा जानता है और क्रेडिट दे दे उसके लिए थोड़ा सा. यस, बिकॉज आई जेन्युइनली हैव वॉइस्ड आउट लाइक क्रेजी दैट मैग्नियन, Rafael Leao, these will be the next big thing. Sandro Tonali, I'm talking from the beginning of last season, जब लोग जानते भी नहीं थे उन लोगों को नाम भी. I'm honestly saying you. Again, a big shout out है even to Michael Talks Football, because I know that he's also been saying that. My bro Michael also has been saying that. Again, I'm not telling against anyone, but I think somewhere down the line, Abhishek, me and Michael probably know about it, what you're talking about. Anyway, but काफी बंदा अच्छा यार. It's too early to judge Leao, लेकिन अगेन गौरव आप बोल सकते थे लियाओ को बेसिकली, इफ यू आर जजिंग बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर आई कुड गेट इट, लेकिन भाई लास्ट ईयर ही हैज बीन कंसिस्टेंट और बिगिनिंग ऑफ द सीजन आल्सो ही हैज बीन द मेन मैन. हाँ, हाफ सीजन होने दो, मे बी देन गौरव इज अ गुड पॉइंट. हाँ, बेटर पॉइंट होगा अगर वो चैंपियंस लीग में भी करे. आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली अ वैलिड पॉइंट देन. या बिल्कुल वही है, Rafael is one of the best wingers, he will be target man for many teams in future, but वही है, even AC Milan की defense are not as good as what you think it is. Talking about that, talking about defense, I have to admit, और यहाँ पर मैं admit कर रहा हूँ, I'm putting my hand up, AC Milan were lucky. Let's be honest, AC Milan were lucky. क्यों? Not, yes, we deserved to win the match, absolutely deserved. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था ओवर मेजर पार्ट ऑफ द मैच. लास्ट में भी अच्छा डिफेंड किया वापस से, ठीक है, आफ्टर दैट जो बॉम्बार्ड किया था जेको ने, लेकिन उसके बाद 20 मिनट के लिए हम अच्छे नहीं थे, लेकिन फर्स्ट 1 आवर वी वर वेरी गुड एंड देन लास्ट से 15 मिनट हम वी वर वेरी गुड. तो 75 मिनट्स वी डिजर्व इट. लेकिन आई हैव टू से दिस, नॉट मैग्नियन, नॉट लियाओ, नॉट जिरू. One thing which probably saved AC Milan towards the end is that AC Milan did not go down to 10 men. Theo Hernandez, again, who was on a yellow card, clearly foul किया था उन्होंने, clearly. I have no idea. I think it was a Dumfries कि वो yellow card कैसे नहीं दिए और VR क्या कर रहे थे उस समय. Trust me that Theo Hernandez was lucky. We should have gone down to 10 men. लेकिन would it have changed the result? I'm not sure. Maybe a draw at best. Henry, basically, Henry, वही है. I would say combination of Henry and Zaha, if you think about it. Maybe मुझे वो लगता है थोड़ा, लेकिन कोई नहीं. कोई नहीं. Giroud was fire. I don't know how he always steps up. वही है, he has that thing यार. गौरव, आपका कमेंट मैंने देख लिया ना? हाँ, देख लिया आपका कमेंट, चलो कोई नहीं. लोटारो मार्टिनेज का गेम देख के मेसी की हार्ट बीट ऊपर चला गया. ये क्या है? इसके साथ स्टार्ट करेगा मैं वर्ल्ड कप. अरे चलो देखते हैं. Imagine Kova in this Milan team. Oh man, bhai, matlab, I will not imagine. I want Kova in Chelsea. But again, probably, I think Benacer is good. Yeah, Benacer is defensively very good. Plus, left foot from what I know. So I think it kind of works. Tonali or Benacer, I think, is a good midfield pair in my opinion. आप लोग बोलिए, what do you think? Giroud is one of the most underrated strikers. He always steps up. Bilkul, you have to be in awe of how potentially Leao can finish with both feet effectively. Decimated the defense, the goalkeeper. Yeah, Bilkul. Again, ये मैं shout out नहीं दूंगा because they are not my sponsors.
लेकिन again do DM me, I can probably let you know, and again हम next में hopefully we'll get a sponsor as well. And yes, by the way, that reminds me, let's like the stream यार. Likes कितने हुए भाई? देख रहा हूँ मैं. Likes कर दीजिए. We'll come to all the matches. We have covered, I think up till now we have covered Tottenham का match, Liverpool का match, Chelsea का match, and Milan का match. But and a little bit of we have covered, I think was Newcastle का match. But we are going to cover all the matches beat in Europe. ठीक है. तो भाई 100 likes भी नहीं हुए. Is it for real? Come on. 100 likes तो बनता है ना कम से कम. 150 is the target. Let's go to 150 likes. It's just the press of a button यार. Come on. You can definitely help us get there. और वही है भाई चाबी. स्ट्रीम की चाबी वही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड चैनल में सब्सक्रिप्शंस भी अगर नहीं किया आपने तो किया यार. मैं अगेन आई नो आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक थोड़ा सा फॉर जस्ट अ मिनट. मैं वापस से स्टैट देख रहा था भाई. यू नो व्हाट, क्लोज टू 70% लोग देख रहे हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है हमारे. आर यू फॉर रियल? आप लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार? आप लोग मुझे बोलिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हमारे दोनों चैनल्स में, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस और ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. Close to 70% people are watching me who have not subscribed. I don't know why. It's absolutely free of cost. Again, आपको अगर criticism है तो please share करिए मुझे DM में. Okay, one of the reason AC Milan won Serie A, yeah. Aging strikers tend to go to Serie A, yeah. That's also a fact. Theo, lucky guy, very lucky. In fact, भाई बोला था ना Theo is not lucky. Money is there. Looking at Theo and Hakimi, we are stuck with two players made up of glass. ओके. आमपड़ू क्या था भाई? वापस से कर लीजिए. इट्स ओके यार. मतलब अगेन पीपल आई माइट मिस आउट ऑन कमेंट्स. मतलब आई ट्राई एंड टेक एज मच एज पॉसिबल जो इज रिलेटेड टू व्हाट आई एम टॉकिंग. और मे बी आप लोग कोई बढ़िया पॉइंट बोलते हो या मेंबर्स करते हैं तो आई ट्राई एंड टेक इट. बट अगेन देयर इज अ वे टू प्रायोरिटाइज कमेंट्स. यू कैन ऑलवेज सुपर चैट अगर आपको लगता है यू कैन अफोर्ड एंड वी डिजर्व इट. अगर आपको मिस नहीं करवाना है कमेंट, यू नो, तो लाइक आप देख रहे हो बैनर नीचे. एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू बार्सिलोना बेबी. कम ऑन, लेट्स मूव ऑन भाई. बार्सिलोना देख लेते हैं भाई. चलो बार्सिलोना में मूव हो जाते हैं. एंड बाय द वे हम वापस से सेरिया और ईपीएल दोनों पे ही आएंगे बिकॉज आई नो दैट देयर इज अनदर मैच जो सेरिया की बात करनी है एज वेल एज ईपीएल का भी बात करना है एब्सोल्युटली. बट थोड़ा ला लीगा हो जाए. पीपल व्हाट डू यू थिंक? रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस पहले कि बार्सिलोना? चलो पहले बार्सिलोना का कर लेते हैं जो आप लोग बोल रहे हो. आई थिंक देयर आर मोर बार्सा फैंस इन द चैट तो आई कैन सी दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू बार्सिलोना चैट. एंड यस पीपल, सबसे पहले बोलिए एंड आई पुट अ पोल एज वेल. आपके लिए बार्सिलोना away to Sevilla, who was your man of the match? Who was your man of the match in that particular game? Because in my opinion, yes, definitely Sevilla is not that Sevilla of last year or years before. Like, at the same time, I think there was a certain person in defense जिन्होंने काफी अच्छा किया because he was one of the catalysts for the others to do well, in my opinion. और वो काफी अच्छे थे मेरे लिए. कुंडे या आई वाज एक्सपेक्टिंग कुंडे भाई. अगेन आई नो काफी लोग बोल रहे थे आपने क्यों पीएसजी और मेसी का मेंशन नहीं किया था इन द पोल दैट यू हैड पुट टुडे. एंड मैंने फिर बाद में कमेंट भी किया था. लेकिन अगेन फॉर मी कुंडे probably had a till now match of the best match that he had in Barcelona. कुंडे playing as right back especially, ठीक है. आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो कुंडे टू बी अ टिपिकल राइट बैक. बट कल मे बी सेविया वर गिविंग इन स्पेस और वॉट एवर इट इज. भाई कुंडे डिड एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली. अच्छा ये है चेल्सी टोल. एक सेकंड आ रहा हूं मैं इसके लिए. गौरव ने वापस कमेंट किया है. चेल्सी टोल स्पेजिया मैनेजर टू प्ले एम्पडू सेंटर बैक सो व्हेन ही कम्स नेक्स्ट ईयर मे बी वी कैन ट्राई एंड सेंटर बैक. ओके, इंटरेस्टिंग गौरव. स्पेजिया का बैक 4 खेलती है कि बैक 5 खेलती है? लेट मी नो अगर आप देखते हो. मैं तो स्पेजिया को देखता नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट. फीलिंग सॉरी फॉर रूडिगर. आएंगे भाई. नहीं रोटेशन होगा, सॉरी नहीं है. या अगेन एब्सोल्युटली मार्क. भाई अगेन वी हैव स्पोकन लॉट्स अबाउट इट. मार्क, डू चेक आउट हमारा जो स्ट्रीम था. डू चेक इट आउट. जस्ट गो फ्यू मिनट्स अर्लियर, यू विल सी वी स्पोक ऑलमोस्ट 25 मिनट्स 30 मिनट्स ओनली ऑन चेल्सी. भाई बारसा तो बेइज्जत करके हरा रही है सबको. वो एक्सपेक्टेड था यार. आई थिंक वही है, दे हैव टू मेक समथिंग ऑफ दिस सीजन. ट्रस्ट मी, इतना रिस्क लिया है. गावी, हाँ गावी भी, आई थिंक गावी भी काफी अच्छा किए थे फॉर मी. अगेन मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो हुआ था बार्सिलोना का इन टर्म्स ऑफ सिस्टम एंड व्हाट नॉट. लेकिन गावी भाई, गावी में एक चीज पता नहीं आप लोग ने नोटिस किया कि नहीं, गावी हैज बिकम अ बेटर टैकलर नाउ. वुड यू अग्री विद दैट? मतलब आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इज ही लर्निंग दिस ट्रिक्स. लेकिन भाई गावी जो ऑलरेडी बहुत बेहतरीन फुटबॉलर थे भाई, ही इज हैविंग अ सुपर्ब टैकलिंग एबिलिटी नो. ये कहां से आया? टैकलिंग एंड जस्ट टू एटीट्यूड इन गावी जस्ट फायर, व्हिच अगेन जब एकेडमी डेज से जस्ट आए थे वो देखने को मिला नहीं था मुझे. आई डोंट नो, आप मे बी I don't watch every second of Barcelona, but again I try and watch most of the matches of Barcelona. मुझे लगता है कि गावी
wasn't known for it, and now you're seeing that होता ना एक slightly edge, over the edge वाला चीज आ गया गावी में, which is something very good. बिकॉज आप देखिए वहां पर पेड्री या बुस्केट्स है, दे प्रॉब्ली नीड अ गावी. मुझे लग रहा था अगर कैसी को नहीं स्टार्ट करेंगे इस सीजन में, वेयर विल दैट स्टील कम? दे प्रॉब्ली नीड दैट एट सम पॉइंट इन बिग गेम्स, और मे बी गावी कैन बी दैट पर्सन. लेट मी नो. या फर्स्ट 20 मिनट्स इट वाज ऑल सेविया. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कुंडे का बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस था. बिकॉज रिमेंबर वो राइट बैक खेल रहे थे, ही वाज नॉट प्लेइंग इन हिज प्रेफर्ड पोजीशन एज सच. और वो ये फर्स्ट 15-20 मिनट्स हैड टू स्टे, एंड देन इट वाज ऑल बारसा. एब्सोल्युटली गावी, कुंडे अरे थैंक्स मटाटे यूनाइटेड, मच लव टू यू. एब्सोल्युटली. थॉट ऑन टुडेज गेम. भाई कौन से वाले गेम? इंडिया पाकिस्तान बोल रहा हूँ. इंडिया पाकिस्तान में हम लाइव है भाई, 6:45 विल बी लाइव. तो जॉइन अस ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल भी है, तो वील कंटिन्यू दैट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल वॉच अलोंग एज वेल. और मैंने थॉट्स काफी दिए हैं अबाउट दैट गेम इन यस्टरडे स्ट्रीम that we did for a preview for the weekend, लेकिन I'll do again towards the end of the stream, so please hold on. Hi Justin, Thiago is back at training from tomorrow. Wow, interesting, nice news for Liverpool fans. Everyone is talking about James. Yeah, ये मैं पढ़ लिया था. Mark again, please go and watch it. Kunde was brilliant, but for me the man of the match would be Gavi. He's simply unbelievable, and he's just 18. A few years and this guy will surpass the best of the best. He can press for 90 minutes. मतलब अगेन देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट, यस ईदर ऑफ देम आप दे सकते हो. इवन आई हैड अ कंफ्यूजन मैं किसको दूं मैं, लेकिन आई थिंक कुंडे, द रीजन बीइंग ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट सेविया, और द फैक्ट दैट ही वाज प्लेइंग नॉट इन हिज फेमिलियर पोजीशन इतना ना, और ही डिडंट लुक आउट ऑफ प्लेस एट ऑल, इसलिए मैंने बोला है, और कुछ नहीं. लेकिन अगेन देयर इज अ डिबेट एट बेस्ट. सॉरी गाइस, मैन अभिषेक मैन, व्हाट अ कमेंट भाई. या ये मैं और शायद डेरेन बात कर रहे थे इसके बारे में कल चैट में व्हाइल द मैच वाज गोइंग ऑन. व्हाट वाज दैट मैन? What was that? What was that by Lavia, who has been signed this summer by Southampton, and Chelsea wanted to bid it. I think triple the amount that we were giving. भाई पागल हो गई भाई, no planning at all. But कोई नहीं, we'll get there. We'll get a director of football and we'll do better in next transfer window. Not that you've done badly now. Gavi has no fear. Divyanshu बोल रहे, he will go head to head with players like Rudiger, Casemiro, Ramos, and still win the ball. The first 15-20 minutes was poor, but those counter attacks was crucial. And again, talking about counter attacks, how was the pass? How was the pass of Kunde? And I know that मैंने काफी दफा बोला यहाँ पर, मुझे एडमिट करना, हाथ ऊपर करना, भाई कुंडे हैज अ मिस्टेक इन हिम एटसेट्रा. भाई कल ही वाज लुकिंग गुड, दैट्स व्हाई अगेन आई एम कमिंग टू कुंडे का जो पास था टू लेवेंडोव्स्की. आई नो इट लुक्स वेरी सिंपल, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट. ट्रस्ट मी इट्स नॉट फॉर अ सेंटर बैक प्लेइंग एट राइट बैक डूइंग दैट पास जो किया, और लेवेंडोव्स्की का इक्वली रन काफी अच्छा था, फिनिश भी. इन माय ओपिनियन यस, सेविया डिफेंडर्स gave him the space, लेकिन even to have that vision to play that ball for a centre back playing at right back, I think you have to give by Kunde the all the credit in my opinion. और इसीलिए मैंने कुंडे को मैन ऑफ द मैच दिया है मैंने तो. But again, Gavi, Sevilla surprised Barca with 4-4 to Diamond, as not expected by Xavi when he realized that Xavi fixed the match at mid-half. Okay. अरे भाई ये काफी अच्छा बंदा है. इनफैक्ट there's a story behind him. मतलब you have to read that यार. Poor thing, he has, I think he's lost his one parent, but definitely यार काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. Not that most of the cricketers की नहीं होती, but definitely निजाम शाह का है. And this is for any sport. That's why I'm talking about this topic, even though it's off topic. People do go and look at Nizam Shah's story as a Pakistani cricketer. अगेन प्रेडिक्शंस आज मैंने बोला है. अगेन मैं क्विकली यहाँ पर आना चाहता हूँ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी. यूनाइटेड आर्सेनल, भाई मैंने कल बताया था द फैक्ट दैट आर्सेनल हैव बीन विनिंग एंड विनिंग एंड विनिंग, और अभी भी दे आर टॉप ऑफ द टेबल. दे विल बी ऑन टॉप ऑफ द टेबल डिस्पाइट एक लॉस. तो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ टेबल क्या है प्रीमियर लीग का. क्विकली आई विल कम टू द बेसिकली प्रीमियर लीग. बाय द वे बारसा का जस्ट बिफोर एंडिंग, बारसा द टॉक, यस वी आर कमिंग टू रियल मैड्रिड एज वेल इन फ्यू मिनट्स. लेकिन बारसा का भाई रफीनिया का गोल भी काफी अच्छा था, और रफीनिया का भी पहला गोल है यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द लीग फॉर बार्सिलोना. सो आई थिंक बिग अप है टू रफीनिया. आई नो दैट अगेन कुंडे रफीनिया की तारीफ कर रहा हूँ डिस्पाइट व्हाट हैपेंड विद चेल्सी, बट कम ऑन, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हाट हैपेंड, राइट. तो आप देखिए यहाँ पर 15 आई थिंक इज द पॉइंट्स ऑफ आर्सेनल और मैन सिटी 14. तो इवन दो आर्सेनल अगर हारेगी तो मैं जा रहा हूँ बेसिकली कि यार in this case I hope कि यार draw या win हो for Manchester United, because the reason being that we are there in 5th position, or the more our opposition kind of drops points, और अभी के लिए opposition में देखता हूँ top 4.
तो मेरे लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है, तो मैं तो चाह रहा हूँ ड्रॉ, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट जस्ट टेक द विक्ट्री यहाँ पर अगेन. They are on a high. 3 games, back to back. They have also won, and that is one of the reasons. Okay, so here we have Venkatesh. Thank you, boss. Thank you. Much love to you, Venkatesh. But nice to always get new viewers who actually support us. Not just by, of course, by subscribing, by liking the stream, but of course super chats always helps. Memberships always helps. It'll go back to the channel once I get it to kind of upgrade the channel. But Venkatesh, shout out to you absolutely. And Venkatesh, will be nice to know. I'm guessing you are डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. इफ आई गॉट इट रॉन्ग गाली मत देना मुझे, लेकिन स्टिकर से आपका लग रहा है मुझे आप बेसिकली मैनचेस्टर फैन हो. अगर नहीं हो तो प्लीज करेक्ट कर दिए, और आपका कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो प्लीज डालिए वो भी. वेंकटेश को शाउट आउट. एब्सोल्युटली ड्रॉ यूनाइटेड विन ही लग रहा है. अगेन ओल्ड ट्रैफर्ड में है. ओल्ड ट्रैफर्ड में आई नो दैट आर्सेनल 2 साल पहले 2020 में एक अच्छा परफॉर्मेंस था आर्सेनल का, लेकिन उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर रिसेंट ईयर ओल्ड ट्रैफर्ड में अच्छा रहा है आर्सेनल का. इट्स मोर और लेस ऑलवेज बीन अ ड्रॉ और अ विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. But I don't see a one-sided match. That मैं always बोल रहा हूँ. भाई सादिक भाई is also in the house, I see. Okay. अरे सादिक भाई, much love भाई, कैसे हो? Kunde has always been very good on the ball regardless of position, but a match for me. Okay. Without him, we would have trailed by 2 goals in the first 20 minutes. Okay, fair enough. Again, मतलब you can argue that defense ने kind of kept Sevilla at bay in the first 15-20 minutes. लेकिन वही है, मतलब Kunde was part of that, right? सादिक भाई, इसलिए मैं बोला गया. The fact that he's playing right back, the fact that he's not someone who's known to make those kind of passes as a center back, but from right back, I thought I just gave him. And plus, first 15-20 minutes as a defense, they saved the goal as well. Hello to Mohit, कैसे हो भाई? Okay. Naseem Shah, chalo. My bad. Chalo. Thanks a lot. Do you think Old Trafford atmosphere can rattle Arsenal players in the first 20 minutes? Liverpool playing those misplaced passes. You know what? I think the atmosphere has a big kind of a task. सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि at some point I felt कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो आप देखिए ना, कौन सा गेम था यार वो, was it against Brighton? या अगेंस्ट ब्राइटन है ना, रोनाल्डो जब आए थे सेकंड हाफ में सडन से अपलिफ्ट हो गया था. तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ऐसे दे नीड दैट अपलिफ्ट. सो समहाउ आई फील दैट क्राउड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन फैक्ट है आई हैव सीन दैट ओल्ड ट्रैफर्ड में व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द एटमॉस्फेयर on basically as in these big games against Arsenal, they have actually done very well. So I think it is a certain very important point. Draw match abandon. क्यों भाई? क्यों कोई नहीं. I think so Gavi can do things in Champions League. Well, मतलब मैंने तो बोला है भाई, मैं I have got, मतलब मैं कोई कॉम नहीं रखता है. I am saying you right now, Gavi and Pedri, we will be talking in 10 years of time like we have been speaking about Xavi and Iniesta. मैं तो काफी समय बोला हूँ, even as an opposition fan. I'm telling you, that is the ability, that is the level that they can reach at. Trust me on that. और already भाई Pedri तो दिखा ही रहे 2 साल से. गावी का अगेन काफी सारे चीज किया है गावी ने, जो बेसिकली यू कैन नॉट सी दैट, बट अगर कल का मैच देखो तो यू सी दैट द टैकल्स दैट ही हैज इन हिम, ही हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड एज एन ऑलराउंड फुटबॉलर. Okay, who's better, Greenwood or Anthony? Bhai, as a player, okay. Again, Greenwood is out of syllabus थोड़ा, तो unfair है. लेकिन देखिए, as a player, generally, I like direct players. I like direct people who take direct shots as well as basically can dribble directly one-on-one. So I think Greenwood is a better combination. सच में बोलूं, just as a player, people don't get me wrong. I don't support one bit जो उसने किया है. I believe so. लेकिन Anthony, for the eye, मतलब I like watching Anthony. Put it that way. So Anthony, in my opinion, can do much more things than Greenwood in that wing position. Lekin Greenwood is basically a wide forward who can actually also play as a winger. Put it that way. Better finisher, Greenwood, 100%. Or directness is something that I always want. Of course, as a Chelsea fan, I miss that directness. इसलिए मैं बोल रहा हूँ. लेकिन हाँ, मुझे as a player, if everyone who watch the channel regularly know that, मैं रॉबिन को लिटरली आइडलाइज करता हूँ. तो रॉबिन जैसा जो है डायरेक्टनेस प्लस स्किलनेस जो होता था ना फ्रॉम द राइट हैंड फ्लाइंग, इज व्हाट आई लाइक एज अ प्लेयर. ओके, आई फील गावी इज द नेक्स्ट इनिएस्टा इफ ही स्टेज इन द शैडो ऑफ जावी. ये राइम भी किया भाई, अच्छा शायद. ओके, जो आर्सेनल जीती थी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, उस टाइम कोविड इश्यूज की वजह से सपोर्टर्स नहीं थे. या वेरी गुड पॉइंट. देखिए वही है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी थ्रू इंडियन. एब्सोल्युटली बहुत अच्छा पॉइंट था. वही 2020 में, यू आर राइट, देयर वर नो सपोर्टर्स एट दैट टाइम. Prime example was yesterday in MerseysideDerby. Everton fans were lit. What an atmosphere! Again, मतलब you have to give it to even San Siro में, by
crazy atmosphere था सच में. San Siro में crazy atmosphere था, obviously, at Goodison Park also it was crazy. Give me a point before the match and I will take it happily. Wow, Matata United talking facts here. Because वो ये 3 wins आए हैं, but have they been so convincing? थोड़ा सा पूछ सकते हैं. Arsenal definitely the form team, no two ways about it. But again, we have to talk about couple of other games because I know there are City fans as well. We need Pogba. Okay. let's see यार. Camavinga is world class. चलो पहले रियल मैड्रिड का बात करें क्या भाई? रियल मैड्रिड का क्विकली बात करें and then we'll come to City. Is that okay? Let's see. Just give me a couple minutes क्योंकि मुझे लग रहा है भाई रियल मैड्रिड ना, are they experimenting too much? क्या लगता है people? Are Real Madrid experimenting a bit too much? मतलब I feel that them changing the backline again and again थोड़ा सा backfire हो रहा है. मतलब उन्होंने कल भी concede किया है. मतलब is it a coincidence or is it me reading too much? हाँ, by the way, Real Madrid at home to Real Betis has not been doing well over the years, I believe. ठीक है, they have not been scoring goals, right? तो कल finally they won, they scored 2 goals. Of course, both the goals were brilliant goals. लेकिन would you argue that the fact that Rudiger, whom they signed, of course, as the free, लेकिन टेक्निकली भाई चेल्सी की जान थी यार. डिफेंडर्स में बात करो तो चेल्सी की जान थी रूडिगर. तो विद दैट पर्सन मूविंग ऑन, he's not starting week in week out. But is it a fact that it's only because of rotation? Yeah, Ancelotti actually believes that having Mendy at left back is better in terms of defensive structure. I still feel that Alaba as a left back is underrated. I don't think so that he's as मतलब इतना porous नहीं है जितना आप सोचते हो. मतलब again आप अगर disagree करते हो या agree भी करते हो, either way let me know in the comments. क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सरप्राइज लगता है. बट एनीवे इट इज व्हाट इट इज. लेकिन वन गाय हु स्टूड आउट, एब्सोल्युटली स्टूड आउट, आई थिंक चुआमेनी यार. मतलब काफी रियल मैड्रिड फैंस को लगा था that it is basically a problem that we have let go Mr. Casemiro to Manchester United, जिसकी बात किए थे हम. बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल का सब लोग भाई स्टार्टिंग 11 बता दो, क्या लग रहा है आपको लोग? आर्सेनल फैंस आर्सेनल की स्टार्टिंग 11, मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और बेसिकली न्यूट्रल्स आप बताओ भाई, विच प्लेयर आर यू लुकिंग आउट फॉर मोस्ट? बट हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा स्टार्टिंग 11 वो आज. लेकिन यहाँ पर मैंने तो अपना दे दिया था कल, बाय द वे कल स्ट्रीम में लाइव. कामाविंगा, मॉड्रिच एंड चुआमेनी. So yes, I agree. While Kamavinga is definitely helping Chouameni, but I think Chouameni is standing out in my opinion. He's really standing out. The fact that Valverde could have also played there in a double pivot, वो आप सोच सकते थे. लेकिन आप देखिए ना, Chouameni literally has replaced Casemiro in a role. और वो चीज जो है he can do, मतलब arguably he can do more than Casemiro in the long run. अगर आप देखते हो Chouameni को from a long time. Again, I'm talking about Chelsea here. We were very, very strongly linked to Chouameni. जब Fabregas ने recommend किया था भाई, we had seen all the clips of Chouameni. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ confidently. Okay, Fede sub change the match. वही है, मतलब like I said, Valverde can be there. Definitely having that extra, एक है ना turbo. Fede के पास एक turbo है, एक engine है. Absolutely. Okay, just like Della for you, Mark Bartra, Dennis Suarez, Mark Muniesa, Boyan, and many more. I agree, Gavi and Pedri are outstanding, but they have to prove a lot. Yeah, well, consistency is the key over the period of time. Okay, now you see Kamavinga for 40 million as a bargain, bro. बिल्कुल. मैंने खुद बोला था 2 साल पहले Kamavinga Ben Mason Mount had him in his pocket, but he improved so much over the last year. अच्छा, अगर last year में ना आप बोलोगे ना, who are the most improved footballers in Europe in last year? When I say last year, last season की बात हो रही है. तो लास्ट सीजन में आई थिंक 3 जन जो स्टैंड आउट करते हैं ना वर्ल्ड फुटबॉल में, जो इंप्रूव किए, मतलब फ्रॉम द प्रीवियस सीजन, कामाविंगा हैज टू बी वन ऑफ देम फॉर मी. मैग्नियन और राफेल लियाओ आल्सो आर. हाँ, कपल ऑफ देम आल्सो मैं ऐड कर सकता हूं उसमें, लेकिन दे आर अमंग द टॉप 5 मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर्स इन वन सीजन, और वहीं पर डालता हूं. लेकिन अगेन द फैक्ट इज दे हैव गॉट अ नैरो विक्ट्री. मतलब इज दैट क्रिटिसिज्म और इज दैट come on, not fair, because Betis के पास भी quality players है. Couple of them are really Rodriguez and Fekir, हम सब जानते हैं, they are quality players. And of course, and like I think in the chat we saw that Valverde changed the game. I think Valverde was very important. I think Dani Ceballos, I don't know आप लोग ने वीडियो देखा है, Dani Ceballos is a very good free kick taker यार. मुझे recently पता चला, मतलब he is a very good free kick taker. But anyway, okay. Let's see now, और क्या comments आ रहे हैं? Did Madrid need Rudiger? भाई they needed Rudiger in my opinion, क्योंकि they want to create एक होता है ना, if one of the first teamers is missing,
They want to have that level of quality, if not better, on the bench. But I was thinking all the while कि David Alaba खेलेगा लेफ्ट बैक और रूडिगर रहेगा सेंटर बैक, बट एंचेलोटी को पसंद नहीं है वो सेंटर हाफ पार्टनरशिप को ब्रेक करने में. लेकिन आई स्टिल फील रूडिगर आने के बाद भी दे विल बी बेटर, बिकॉज एनीवे वो कंसीड कर रहे हैं यार. ऐसे नहीं कि मतलब फ्रैंकफर्ट के साथ, बाय द वे हम बुंडेसलीगा में बात करेंगे, फ्रैंकफर्ट हैड अ क्रेजी रिजल्ट हुआ कल रात को. लेकिन हाँ, फ्रैंकफर्ट, मैं बात करूं सुपर कप में, उसमें अगर देखो तो दे हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस उसमें भी, आपको याद है तो, जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक. एनीवे, currently Pedri and Gavi the best midfielders in La Liga. Camavinga and Chouamani doesn't even come close to them. यार you cannot really compare the Divanshu. I would say बहुत ही different है, because आप देखो ना, Camavinga और Chouamani start from deeper. That's how they are. Gavi and Pedri probably उनका natural position is just in front of Busquets. So there's a difference there वहाँ पर ना. Camavinga a lot of times plays in a double pivot as well, when Valverde coming to play. I know that ideally उनका भी 4-3-3 है, लेकिन I think Chouamani we have to give more time in my opinion. लेकिन हाँ, we can't compare. लेकिन having said that, overall अगर मैं चुनना चाहूँ ना, दो लोग आप चुनना ही है चार में से, तो मैं भी आपके जैसे जाऊंगा अभी के लिए, पेड्री एंड गावी. लेकिन वही है, Chouamani arguably will probably get there in my opinion. That's my opinion. But again, Valverde absolutely brilliant. Ceballos is really good. मतलब भाई improve किया है, मैं इतना बोल सकता हूँ. Really good का तो पता नहीं. Good bench option to come on. He has improved a lot. मतलब वो क्या बदला है यार, एंचेलोटी ने कुछ तो बदला है खाने में डैनी सेबायोस का. हमने बिकॉज आर्सेनल में थे तो चेल्सी फैंस को याद होगा यार, हम ट्रोल करते थे डैनी सेबायोस को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है. लेकिन द गाय हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड गोइंग बैक टू मैड्रिड. आई हैव टू एडमिट दैट. इंडिया और पाकिस्तान ऑलवेज एंजॉय. थैंक्स यार, बिल्कुल यार, हम बाय द वे शाउट आउट है. वी आर गोइंग लाइव लिटरली व्हाट विद इन 3 hours from now, 2 hours 40 minutes from now we will be live on Almighty Sports Plus. Why you not put Barcelona? Ninja Gaming, I had no intention of not to put Barcelona. I had just 4 options in front of me. I have put the 4 that I thought were as a neutral, 2 exciting teams, who went into the match and basically, did that drama in that match. Simple as that. तो ऐसा कुछ intention नहीं है. Again, people, I would recommend not only for me, but कोई भी content creator के लिए assume मत क्या करो यार कि भाई ये बार्सिलोना hater है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने तो बोला है लास्ट सीजन का बार्सिलोना, इनफैक्ट रियल मैड्रिड भी आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर ओनली, कभी-कभी देखता हूँ only because of say Ancelotti, Hazard and those kind of people. That's the only reason I saw mainly. ठीक है, बार्सिलोना में I actually related very closely because of, मैंने बोला था बहुत बार का last season, if you actually follow my channel, that Lampard जब आया था ना चेल्सी में, I'm seeing that kind of phase going on with Barcelona. So I am someone who has seen so much football that if something changes, एक होता ना, you're revitalizing an entire squad, तो वहाँ पर I get more interest. So I'm actually liking the fact of that Barcelona. But at the end of the day, I'm a Chelsea fan, I'm a Milan fan, but I like football, so I follow every football. यार ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so many chances squandered, easily could have. वही है, मतलब they are depending on I think Benzema quite a lot. Talking about finishing, but anyway, Rodrigo and Vinicius Junior scored. So again, talking about improved players, Vinicius Junior, भाई हमें याद है 2 साल पहले he couldn't have scored a goal for anything. सच में यार, सबको याद है विनिशियस जूनियर बेंजेमा खुद गाली देते थे, but he has come and improved that, right? Okay, big up to Matt as well. Matt, कैसे हो? How are you? And yes, Matt, we have spoken about half an hour for Chelsea in the beginning of the stream, so hope you can check it out, bro. Barca is really good and loved by fans. Okay, interesting. Why are Barca hyping? Pedri तो hype नहीं बोलूंगा, गावी का इतना बोलूंगा, he has improved in a certain aspect जो मैंने बोला last few minutes में, ऋषि. That's what I would say. I would not say it's hyping up, यार. They are really talents, यार. मतलब है, come on, let's be honest. गावी, पेड्री, चौमनी, कामाविंगा चारों ही है, मतलब इनफैक्ट दे आर रियल टैलेंट्स, और काफी इंप्रूव्ड हुए इन टर्म्स ऑफ गावी एंड इन टर्म्स ऑफ कामाविंगा. दे आर रियली इंप्रूव्ड प्लेयर्स. चौमनी एंड पेड्री भाई इवन 1 साल पहले भी they were really good in my opinion. Oh my god, Matt is a Kepa fan, just to let you know, people, and of course he looks like Kepa as well. And do you think Rudiger should have waited for new owners and then make a decision? there's a school of thought कि वो रुक जाता and all that, एटलीस्ट एक चांस देता चेल्सी को. लेकिन यार मुझे लगता है ना, हमेशा उसके मन में था कि जाना है भाई, अब नेक्स्ट एक स्टेप लेना है. और अनफॉर्चुनेटली मार्कोस अलोंसो ने भी एडमिट किया है वो अबाउट बार्सिलोना, बिकॉज whether we like it or not, that is the next step for footballers who come in a Chelsea, who come in a Man City, etc. That's a fact, whether we like it or not. Abhi ke liye. Not that I agree, but again, football has changed. Abhi. Okay. Improved player for me was Rudiger. Again, back 3 में काफी improve हुए थे. You can say that. But again, people, Man City की बात हुई थी quickly, and I know Man City में again, I'm shouting out Venkatesh for the super sticker. Thanks bro again. But again, you know what? Man City का मैं बात करने वाला हूँ quickly.
people. Yes, Man City drew. थोड़ा सा राहत आई for opposition fans. You can argue that. But I again, थोड़ा सा disappointing था in my opinion the performance. Let's be honest. Let me know. Man City का क्या लगता है आपको? Was it disappointing or not? सॉरी चीख भी आने लगी, तो आई डोंट नो वेयर इज गुड ओमन फॉर इंडिया और पाकिस्तान. लेट मी नो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल. चलो, तो मैन सिटी का दिस इज व्हाट इट इज. एक पास एंड भाई गेम खत्म. गेम खत्म भाई. डिड यू सी दैट? डिड एनीवन सी दैट डे ब्रुयने का पास? ये भाई क्यों मोरिन्यो, क्यों भाई? हर एक स्ट्रीम में बोलता हूँ, हर एक स्ट्रीम में. Why did you let Mr. Kevin De Bruyne go? Simple as that. Yes, he may not have become the player that he is today under Mourinho. Who knows? लेकिन भाई क्यों 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 क्यों? Man, what a pass भाई. और he was there in the box and that's the thing. 6 games में हालैंड 10 गोल रिकॉर्ड बना दिया भाई ऑलरेडी. भाई Thierry Henry took 27 matches or something. 6 games, 6 games में he's got 10 goals and I did not take him in the FPL. Imagine that. Still, and that's for real. Afford नहीं कर सकता हूँ. But कोई नहीं. For Man City, as long as Haaland scores, I don't care. Wow, because he's in FPL. There is captain. कोई नहीं. चलो, this year EPL will be unpredictable. Do you still think Man City will actually drop more points? क्या लगता है people in the chat? मतलब is it a sign of things to come? Because again, सच बोले तो against the run of play score किया था एस्टन विला ने. जेरार्ड की टीम against the run of play they scored. But again, you can say that this guy, the reason he scored is because मैंने FPL में नहीं डाला उसको अपने playing 11 में. I think I put him on the bench, and that is the reason why he scored. You can argue that, and that is obviously Leon Bailey. By Leon Bailey, the guy has talent. Let's be honest. ये बंदा अच्छा स्कोर किया था, बहुत ही अच्छा गोल था. I think it was a difficult finish. Let's be honest, लेकिन बहुत ही अच्छा क्लासी फिनिश था at the same time. But is there a problem in the Man City defense? Is that something जो एक फोकस चल जाता है सडन से, तो डिफेंस में प्रॉब्लम है? क्योंकि न्यूकासल के साथ भी इन्होंने गोल्स लीक किया है अभी ये. तो does that mean that Man City defense, और मैंने बोला है, I think people members in the chat हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई in possession Man City go two at the back at times. That actually happens. वो खेलती है 2-4-3-1 खेलती है. I don't know if it's right. 2-4-3-1 exactly. तो वहां पर they are actually एक होल है उनमें. तो if you can kind of catch hold of that, that's brilliant. FPL स्कोर में अवॉइड कर रहा है टॉपिक अभी तक. आते हैं भाई, आते हैं, डेफिनेटली आते हैं. मैं स्टार करके रखा हूं. चलो ठीक है. Okay, thanks. Everyone is dropping point, but City is much consistent. Hence, they look like winners. No free lunches in the Premiership. Yeah, you can argue that. I am good. And by the way, thanks for coming on. Do not forget to like the stream and hit that subscribe button. If in case you're not subscribed to both our channels, both are linked below. I think Hazard will become a third option. It's not working out for him. What should Hazard do? Oh, bhai, bichara. I feel sad for Hazard, yaar. Really. I believe that Ancelotti should give him a chance, a run of games as a substitute. And just, hope that, he gets back his form. That's the only solution for now. Yes, we are coming to the main point. CFC Blues, absolutely thanks. And I know that thoda sa yahan par debate chal gaya bhai. People, we have moved on from the Real Madrid and Barcelona games. So let's come back to Premier League for now. But I think the moment of the game, arguably, it was not that either. I know 1-1 ho gaya tha. Probably this was a moment of the game. Again, Barca fans, you might relate to it. I don't know. Bayern fans, you might relate to it. Because connecting both कौन सा भाई? Coutinho. I know Liverpool वाले game में भी होता, talking about connection. लेकिन what do you think, people? What do you think यहाँ पे? I'll just maximize this one. What do you think? Now Coutinho का बढ़िया finish था. अब ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफसाइड तो था ही नहीं. चलो लेट्स गेट दैट राइट. पहले तो आई थिंक द लाइंस में उसने गलती की थी पहले रेस करके फ्लैग. अगर रेस भी किया था भाई, रेफरी ने गलती किया विसल दबा के, ठीक है, तो नहीं करना चाहिए था. इट वाज डेफिनेटली नॉट एन ऑफसाइड. और फिर कुटिन्यो आके मार दिए गोल और बढ़िया फिनिश था. काफी प्रॉब्लम ये था जहां पर मैं आई नो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ ट्वीट्स कि बोले भाई सिटी एस्टन विला वर रॉब्ड. यहाँ पे मैं बोलता हूँ, देखिए पहला चीज ये है कि मैन सिटी डिजर्व टू विन दैट गेम. सच में बोलूं तो ठीक है. सेकंड चीज ये, दे डिडंट प्ले द आइडियल मैन सिटी वाला गेम, लेकिन फिर भी जनरली आई नो फुटबॉल इज नॉट वन ऑन दैट. नहीं तो हम कॉर्नर्स पे जीत जाते हैं चेल्सी का हर गेम में. लेकिन सेकंड मैं ये बोलूंगा, जब बेसिकली कुटिन्यो लिए बॉल और गए, बिफोर ही टुक दैट शॉट विसल दबा दिया था रेफरी ने. तो दैट इज द मोमेंट. वोंट यू अग्री विद दैट?
that won't you agree that that is the moment jab you would say that goalkeeper has stopped. So can you still say that Aston Villa were robbed? I know they were robbed of the offside decision, मैं उस पर नहीं डिबेट कर रहा, and I'm not a City fan, just disclaimer दे रहा हूँ. आप लोग बोलिए whether it was unfair on Aston Villa totally or not, or City probably deserved at least a draw. आप लोग बोलिए यहाँ पर. And yes people, let's get to 150 likes here. Likes दबा दीजिए. Absolutely. Mariano is greater than Hazard. Wow, interesting that. Okay. Yeah, they didn't do well as usual, definitely. But that's the thing I like about football. Yeah, sometimes there's a balancing act. But what was Walker thinking? Yeah, Walker generally, na, I think he's deteriorating. मतलब उसका थोड़ा pace वाला game है. I think he was deteriorating, in my opinion. Simple as that. Should have grammar mistake. Yeah, क्या बोल रहे हो प्रमोद? कोई नहीं. Thanks for coming on, भाई. Okay, should have. Okay. Why isn't people talking about Phil Foden performance is pathetic? You know what? Again, मैं बोलूंगा, he is very young. Just like say a Mason Mount, a Phil Foden, or Kai Havertz. I'm not putting them in the same bracket. लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई उस एज में you cannot get 90-minute performance week in week out in the Premier League because of इतना मतलब physical league है. Of course जो कर पाता है that might become the greatest player. That's how it is. लेकिन वही है Phil Foden in his moment he's still there as very good, right? So I would not criticize him totally, but I hear you. All the Barca players are the best. अरे भाई people in the chat, I request you all भाई Barca versus Madrid थोड़ा सा let's move on yaar, come on. That is an ever going thing, but again I hope it's a fan channel for all to see. I respect everyone, so please respect me as well. जब मैं बोल रहा हूँ ना तो certain things, so let's go that way, right? Much love to everyone coming on. Absolutely. Yeah, this is the point. Alvarez probably मैं बोलूंगा Alvarez has done enough to get starts. मतलब why isn't any City fans in the house? आप लोग बोलिए भाई, what is your thing? Mahrez, by the way, Mahrez missed a goal. Mahrez ने right footer से एक miss किया था. I know right foot is not his real foot. मतलब primary foot, लेकिन he is not basically that player. Maybe confidence missing after not starting. I would argue that Mahrez or basically I know दो ही मैचेस में ड्रॉप किए पॉइंट्स, तो इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. सिटी हैव बीन डोमिनेंट, but still little surprised I would say that Mahrez and basically your Alvarez are not getting a lot of starts. Is it because of consistency in the Premier League जो चाह रहे अभी Pep Guardiola? Let me know in that. England goalkeeper spot, by the way, उस मैच में मैं बोलना भूल गया यार, Pickford had a wonderful game. यार. So अभी you can argue that Nick Pope or Pickford or Dean Henderson, but I think in my opinion Pickford करते हैं भाई, थोड़ा ड्रामा ज्यादा करते हैं, लेकिन पिकफोर्ड इज अ गुड शॉट स्टॉपर इन माय ओपिनियन. मेसी द गोट, चलो ठीक है यार. एब्सोल्युटली, मतलब आई एग्री, बट अगेन द रीजन आई एम सेइंग चलो ठीक है यार, बिकॉज़ काफी देर से मैं देख रहा हूं भाई मेसी वर्सेस सॉरी बार्सा वर्सेस रियल मैड्रिड हो रहा है चैट में, तो भूल जाइए यार. मतलब अगेन पीपल हु आर एटलीस्ट रेगुलर इन द चैनल भाई, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट एंड मूव ऑन टू द कन्वर्सेशन. चलो उतना कर सकते हैं भाई, ये तो नेवर एंडिंग डिबेट है. लेट्स एग्री टू गो दैट वे. बट एनीवे, पेप मेड ओनली 2 subs. Very well watched that. CFC Blues, absolutely. Again, the fact that I know Nathan Ake came on, लेकिन they had Jack Grealish on the bench, Alvarez on the bench. पता नहीं यार, मतलब I'm really surprised about Alvarez. I have to be very honest. मतलब in fact जो last goal मारा था ना उसके बाद काफी surprised हूँ. अरे नितेश नाउस भाई, नितेश आप एक सिटी फैन हो, कैसे हो भाई? बहुत दिन हो गए देखे हुए. लेकिन नितेश आपको क्या लगता है, मतलब Alvarez स्टार्ट नहीं कर रहे, Mahrez स्टार्ट नहीं कर रहे, Mahrez का फॉर्म इसकी वजह से ऑलमोस्ट जा रहा है. मतलब आई नो दैट ही इज ऑलवेज बीन दैट ग्रेट प्लेयर. ऑफ कोर्स दो ही मैचेस में ड्रॉप किया पॉइंट्स, यू नॉट क्रिटिसाइज सो मच, बट डू यू एक्चुअली सी दैट, मतलब एज अ सिटी फैन हु वॉचेस एवरी गेम, प्रीटी श्योर आप अग्री करोगे दैट Mahrez का इज नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन फिनिशिंग. थोड़ा सा वही है, ही इज मतलब ये होता है ना स्नैचिंग एट शॉट्स, वो वाला Mahrez का नहीं आता है, वो हो रहा था कल. एंड अगेन Alvarez नॉट इवन स्टार्टिंग, नॉट इवन कमिंग ऑफ द बेंच. क्या बोलोगे उसके? Pickford for England is prime Neuer. अरे प्रमोद ठीक है यार, चिल मारो यार, चिल मारो. मतलब अगेन कैन यू आर्ग्यू दैट दे आर टोटली नॉट, मतलब यू कैन आर्ग्यू दैट बेसिकली देयर आर अ सेट ऑफ मिडफील्डर्स, दे आर अमंग देम. इतना मैं बोलता हूँ एब्सोल्युटली. इफ कोवाचिच लीव्स एंड लियाओ जॉइंस चेल्सी, वुड यू सेलिब्रेट और क्राई? नहीं यार, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. यस आई नो कोवाचिच इज मे बी ही विल गो इन undergoing surgery, मुझे पता है, और maybe his career will not be that way, but I really like Kovacic in midfield. Driving runs, वो pressure को झेलते हैं in midfield. I think that is very rare to find. Lucas Vazquez is better than both. Okay. Do you think City? Come on, Paneer. Stop it, यार. Let's move on. Much love to everyone. भाई सब लोग like कर दो इस टीम को.
भाई ये बारसा रियल मैड्रिड का वॉर कहाँ से शुरू हो गया यार? मैं कवर कर रहा हूँ सब मैचेस के बारे में, कहाँ से शुरू हो गया? प्लीज let's stop that यार, come on. I'll just keep ignoring you all. Let's not do that, right? चलो, let's like and focus on what you're talking. Do you think City should at least keep Jesus or Sterling? I don't think so. I don't think so. They're fine. They're fine यार. Come on. अभी again they've just dropped 4 points. ऐसा नहीं है कि ज्यादा पॉइंट ड्रॉप किए. Yes, they're conceding. तो arguably you can say that उनकी डिफेंस में प्रॉब्लम है because of Walker not looking that convincing of late. सडन से, और लपोर्ट भी इंजर्ड है. लेट्स गिव देम दैट. तो मे बी दैट इज वाई. लेकिन अटैक में भाई आई कैन नॉट क्रिटिसाइज देम. दे आर प्रोड्यूसिंग चांसेस लाइक एनीथिंग. De Bruyne, Silva, keeping Silva was great, and of course Alvarez is great for me. Come on, I don't think so. And Mahrez is just a form or confidence thing. वकार कैसे हो भाई, कैसे हो? सपोर्ट चेल्सी को 22 साल हो गए सपोर्ट करते हुए. लेकिन हाँ, फुटबॉल देख रहा हूँ भाई क्लोज टू 25 years. कोई नहीं. पोस्ट जिडान एरा वी हैव फोकस्ड more on bringing and developing our younger players more rather than going for those marquee signings. Okay. City looked so good with Alvarez starting last game. Alvarez should have started in the game. Mahrez थोड़ा ऑफ फॉर्म में जा रहा है. अंकित भैया, इन 1 to 2 seasons आई थिंक हम Mahrez का रिप्लेसमेंट ले लिए के लिए जाएंगे. अरे भाई Mahrez हमें दे दो यार नितेश. हमें Ziyech is not doing week in week out. Mahrez is more consistent, a different player, more dynamic. भाई Mahrez दे दो. Mahrez I would love at Chelsea यार. I would love, and people know me. I love that kind of a player, man. Come on. Ankit bhaiya, is Oba the player you actually want? Didn't he leave the Premiership because he couldn't perform and all? नहीं Rishi, that wasn't the case. Again, recent में भी देखो तो बार्सिलोना के साथ अच्छा किया है बंदे ने. और आर्सेनल में भी I don't think performances are that bad when he was actually in his mind. जब वो आर्टेटा के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गया ना, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस डिप करने लगे. जस्ट लाइक, आई नो डिफरेंट पोजीशन है, बट रूडिगर अंडर लैम्पार्ड टुवर्ड्स एंड हग रहा था. You know, there is an argument that sometimes when the player is not playing 100% with your heart, it happens. That's human. लेकिन हाँ, he's not as fit as what he used to be a couple of years ago. वो भी है ऋषि. तो टाइम विल टेल. अपने सिस्टम में हर एक स्ट्राइकर हकता है, वो भी है ऑलमोस्ट. बट नंबर 9 लिया है, कॉन्फिडेंस है बंदे में. कल भी आए थे भाई स्टेडियम में, सपोर्ट कर रहे हैं पूरा. होपफुली ही इज दैट पर्सन जो फ्लूइड भी हो सकते हैं. ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड चैनल ऑल्सो, हम जानते हैं. बारसा के साथ प्री सीजन में देखा था. आई नो प्री सीजन था, बट आई थिंक ही डिड वेल विद लेवेंडोव्स्की इन अ गेम, आई रिमेंबर. तो ही स्टिल हैज इट इन हिम. वेदर he'll be able to do that for 2 seasons, I doubt. लेकिन एक सीजन के लिए करेंगे मेरे ख्याल से, देखते हैं. Gallagher, कल वो he was trying to play Gallagher in that hole in front of Loftus-Cheek and Kovacic, but it didn't work. He was not in between the lines. Rather वो basically या तो उनके साथ ही थे सेम लाइन में, जिसके कारण साइडवेज पासिंग हो रही थी, या तो basically he was in the right wing for whatever reason. तो I think उन्हें एक रोल फिट करना है, and he has to just play freely in that role. By the way, Kamal Raj Outlook, thanks for coming on. We have discussed almost half an hour in the beginning of the stream about the Merseyside derby, about Chelsea, West Ham, of course, and of course about a couple of other teams as well. City should only should have kept Jesus. Sterling is wasteful. Let's see, Malab, again, Jesus, again, he has not scored more than 15 goals a season. He has started like superb, but let's see if he can continue. That's the only jury is out for me, Nitish. हाँ, स्टर्लिंग भी आर्ग्यूबली इज नॉट प्लेइंग इन द राइट पोजीशन चेल्सी, तो अभी के लिए थोड़ा वेट करूंगा नितेश टू जज ऑन स्टर्लिंग. एंड ही इज नॉट स्टार्टेड बैडली ईदर. Thiago Silva was right about Lucas Paqueta. Oh yes, ये मैंने पॉइंट भूल गया यार while talking about Chelsea West Ham. Yatin, thanks for bringing it on. Lucas Paqueta, I think जो काउंटर अटैक कर रहे थे भाई, he was crucial to that. Also his strength, I was pretty much वो expected था. Lucas Paqueta always was known for his off the body strength, और वो दिखा रहे थे कल. Lucas Paqueta has that in him. Again, being a left footer helps against Chelsea. Left footers really do well. That's also a thing. अगर आप नोटिस करते हो तो. अरे कोई नहीं यार दिव्यांशु, कोई नहीं यार. मतलब अगेन मैं तो ना तो बारसा के साइड हूँ, ना तो रियल मैड्रिड के साइड हूँ. मैं तो फुटबॉल के साइड हूँ. लेकिन हाँ, थोड़ा सा बायस टुवर्ड्स चेल्सी इन मिलान डेफिनेटली. इज ओमांग इट इज बट लेट्स सी. कल क्या गैल्टियर ने इंडायरेक्टली एम्बापे को लेसन दिया एटीट्यूड लेके. ओके चलो, देरेन भाई डिलीट वन तो गेल यार, सॉरी. आई लव बोथ, लेकिन गेल एबीडी आई लव. आई ऑलमोस्ट मैं पूछता हूँ यार एबीडी को. भाई थोड़ा हो जाए पीएसजी के बाद. वी स्पोकन अबाउट ऑल द लीग. भाई लीगा का अभी तक डिस्कस नहीं किए भाई. व्हाट डू यू थिंक? आई नो नांटेस ही थी. यू वुड नॉट आर्ग्यू दैट ओके कम ऑन, इट्स अ ग्रेट साइड और समथिंग लाइक दैट. लेकिन
What did you make out of the PSG? For people who watched that PSG match, I know that I put Mbappe on the thumbnail. I know that, लेकिन मैंने वो भी डाला है भाई. Award चुप करा रहे उसको thumbnail में, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो खुद. लेकिन the fact है भाई PSG. अब Messi, the main thing is, the most important thing for Messi fans as well as PSG fans is that Messi is the central figure in that PSG gameplay. That is the most important thing. ठीक है. लेकिन अब भाई कल वी ऑल नो दैट भाई नेमार केम ऑन द बेंच और वहां पर एम्बापे वाज शाइनिंग. इज दैट अ फैक्ट कि भाई नेमार नहीं थे इसीलिए एम्बापे वाज शाइनिंग? और एम्बापे, मैंने काफी दफा बोला है, ही इज बेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड चैनल इन दिस लास्ट 1.5 years कंपेयर टू द राइट हैंड चैनल. तो वहां पर मे बी इट इज अ थिंग दैट आप सोचोगे, राइट? बट द फैक्ट इज ही गॉट गोल्स और ही सेलिब्रेटेड गोल्स. ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, टोटली ही सेलिब्रेटेड गोल्स. तो आर वी रीडिंग टू मच इनटू द मेसी एम्बापे? लाइक मैंने खुद बोला था कि यार वी आर रीडिंग टू मच. दैट्स माय ओपिनियन दैट ये एट द एंड ऑफ द डे भाई ही एक यंग बंदा है. ही हैज नॉट बीन काइंड ऑफ काउंसिल्ड वेल इन द रीसेंट पास्ट और दैट इज व्हाट इट इज. आप लोग ज्यादा रीड मत करो. ये डेफिनेटली भाई मेसी है द गोट along with Ronaldo. I consider Messi is the goat, although I'm not a stan. I have to respect that they are goats. And if he is there, भाई वो सिखा देगा उससे. yes, डायरेक्टली नहीं सिखाएगा तो इनडायरेक्टली सिखा देगा how you kind of lead by example. So वहां पर I think the fact that Sarabia was there, maybe Mbappe को एक स्पेस मिला, लेकिन मेसी being the main man और 2 assist, highest number of assists this calendar year, is that for real? Bhai, it's September already. Messi has got the highest number of assists and we are saying that Messi has not had a good year. Oh man, Messi, इसलिए ना हम benchmark अलग करते हैं Messi and Ronaldo के लिए. Ronaldo was one of the highest scorers in the Premier League last season. Messi इस season इस calendar year में highest assists यार, if I'm not wrong, in Europe. Wow, that's some stat anyway. I was surprised, but anyway, good for Messi fans and good for him. But yeah, Galtier काफी centrally use कर रहे हैं उनको. Yeah, 100% I do get angry यार. Angry मतलब it was like frustration, man. Oh no, man, ये नहीं होना चाहिए था. But again, we should have also finished better in that game. Ramirez scored against तेरे नाम भी बस शुरू हो जाओ भाई. यहाँ पर रियल मैड्रिड फैंस और बार्सा फैंस ऑलरेडी है, लेकिन हाँ, Ramirez, that was probably one of the moments as a Chelsea fan. I can safely say. मतलब come on, even Barca fans will agree that was a fantastic goal against the run of play. There is watch along. मैंने already 4-5 बार announce कर दिया है. Anyway, again announcement जाता है for everyone that yes, there is a watch along. We are going to be live, right before 7 p.m. on Almighty Sports Plus. So please be there. Angya, how do you actually rate Gallagher? To be honest, I don't think he's not ready to play in the system. It's too early though. By the way, shout out to R9, yeah. Definitely an Almighty fan, Almighty. I think Almighty Scout. But anyway, he is a member of Almighty Blues FC. So thanks for coming on always, bro. भाई Gallagher को I believe he's either trying too much or वो अपने shell पे है. He's not naturally playing like what he was in Crystal Palace. So he needs to come out of the shell somehow. Or maybe we have played him in 2 different positions in 2 different matches. तो हो सकता है that might be a reason. So let's see, time will tell. लेकिन अभी के लिए the fact is I think he should be replaced by Broja in the starting lineup, or we need to go with a central striker. We don't need that cam position सच में अभी के लिए. अंकित भाई, Mason Mount's performance this season हगा है यार, हगा है literally हगा है ऋषि. रीजन वही है, like आप लास्ट सीजन बोल रहे थे हम पेड्री गावी फॉर एग्जांपल काफी सारा फुटबॉल खेले हैं. एट सम पॉइंट यू नीड अ ब्रेक. मेसन माउंट का वही है, फॉर इंग्लैंड, फॉर चेल्सी इज प्लेड टू मच ऑफ फुटबॉल, just too much football. I think he deserves a break and hopefully he'll recharge his batteries and come back. लेकिन young है अभी भी, so that happens यार when you're talking about form. And Foden की बात करें तो हम. अंकित भाई, do you feel angry? ये चलो ले लिया था भाई. Please do not spam promote भाई. कैसे हो? Do you think Kai and Broja Oba play together? Again, Kamal Raj outlook, I have spoken about it maybe for about 30-35 minutes. So please check करिए beginning of the stream. The reason I'm saying that is because almost 2 घंटे आने वाले भाई. We are still yet to finish all the matches. But thanks as well. Ankit bhaiya, Oba अच्छा signing लग रहा था मुझे चेल्सी के लिए until I saw his number 9 jersey. कोई नहीं देखते हैं. मतलब again time will tell. Brave है, इतना ही बोलूंगा. Oh my god. Oh, quality, yeah. I also agree there. लेकिन I think एक चीज मैं बोलूंगा, I am also not a Liga fan. मैं ऐसे नहीं बोलने वाला मैं Liga fan हूँ. Definitely, I'm not even a stan of Messi. Although I respect him as a goat, I'm a fan, but not a stan. क्या चीज मैं बोलूंगा ना, ओनली थिंग इज अबाउट लीगा, एक डिफेंसिव एबिलिटी जो लीगा में देखते हैं, बुंडेस लीगा भी,
आई थिंक वो थोड़ा सा अंडररेटेड है, थोड़ा सा मतलब जो चैलेंजेस आते हैं, इट इज काइंड ऑफ, इट कैन गेट डर्टी, इट कैन गेट टफ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो इट्स नॉट एज इजी फॉर स्ट्राइकर्स जो आप समझते हो एट टाइम्स इफ यू एक्चुअली वॉच लीगल गेम्स. अगेन आई डोंट वॉच एवरी गेम, लेकिन अगर गेम देखता हूँ तो भाई पूरा गेम देखता हूँ. दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. Oh my God. Tell me a better off spinner than nice one, nice one, nice one. Bhai. Anyway, Messi has 16 assists and exactly मतलब वो एक मतलब आउटस्टैंडिंग स्टार्ट है कंसीडरिंग कि हम सोच रहे हैं कि मेसी नॉट इन फॉर्म है. इमेजिन. और सेम थिंग अबाउट रोनाल्डो भाई, ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स लास्ट सीजन. तो थोड़ा सा आई नो हम, इट इज मे बी अनफॉर्चुनेट फॉर देम, यू कैन से दैट इतना बेंचमार्क किया उन्होंने कि हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग सो मच. बट द फैक्ट इज वही है, मेसी लास्ट सीजन खुश नहीं लग रहे थे इतने कंपेयर टू दिस सीजन. This season, I think, is looking more natural, maybe because Galtier is playing in that position, giving that freedom. Okay, people argue Messi is not scoring goals, but they have to understand Messi is not a creative playmaker than a goal scorer. Maybe due to his age, he has changed his style. Yeah, Makar, you have to give him that, absolutely. Just Ronaldo changed from a winger to a striker. So, yeah, great players always do that, yeah. You have to agree there. I think Mbappe's staying was a lot to do with playing alongside Messi. The knowledge transfer Mbappe could have had with the Messi's unmatched. Neymar too learned a lot in Barcelona days, yeah. Again, मैंने इसलिए दिखा पिक्चर ना, इन दैट पिक्चर अगेन आई एम नॉट समवन हु रीड्स माइंड्स, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि भाई डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जैसे लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट दैट एम्बापे मे नॉट बी फ्रेंडली ऑफ द पिच विद देम, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. हाँ, उसने गलत किया जो किया, एब्सोल्युटली, but I believe maybe they would have corrected it by now, hopefully for PSG's sake and Mbappe's sake. Not that I'm a fan, I'm just saying. If Vitinha is seriously injured and doesn't start against Juve, I think PSG will have some trouble. चलो, by the way, shout out है not just to Almighty Sports Plus जहां पर हम करने वाले क्रिकेट का वॉच अलॉन्ग, बट ऑल्सो UCL का प्रीव्यू होने वाला है कल. तो कल शाम को मिलना भाई on Almighty Blues FC for UCL end-to-end preview. Yeah, we should give them time. Absolutely. Question skipped. Sorry, Dhirendra, but again, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक नीचे एक चलते जा रहा है गाड़ी जैसे, तो प्लीज रीड दैट मैसेज. आप अगर प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो तो देयर इज ऑलवेज ऑप्शन ऑफ सुपर चैट, लेकिन अगर वो रिलेटेड है टू व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड आई थिंक आई कैन टेक दैट क्वेश्चन, मैं जनरली लेता हूँ. तो अगेन थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. अगेन इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू टेक एवरी कमेंट, लेकिन शाउट आउट जाता है भाई आपको. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन एज वेल. गिव अस अ सू. यार मैं, आप ऋषि, आप मेरा फीफा स्ट्रीम में आओ यार, आप देखोगे मैं क्यों बोल रहा हूँ. फीफा स्ट्रीम में आओ, आपको पता लगेगा. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे हम करेंगे. बाय द वे, यस, एक हफ्ते से हम नहीं किया, तो नेक्स्ट वीक वो भी शुरू होगा होपफुली वापस से. इतना फुटबॉल हो रहा है तो टाइम नहीं मिला मुझे, लेकिन वापस से फीफा 22 हम खेलते हैं एब्सोल्युटली इन वर्ल्ड क्लास मोड. यस, बुंडेसलीगा इज मोर इंटरेस्टिंग लीगा. आई एग्री देयर. लेकिन भाई बुंडेसलीगा को क्विकली हो जाए. क्विकली क्या हुआ था बुंडेसलीगा में कल, और क्यों मैं बता रहा हूँ. आई नो कुछ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ था, लेकिन क्यों इंटरेस्टिंग फिर भी है मैं बोलता हूँ, बिकॉज आई थिंक सरप्राइज रिजल्ट जब आता है तो बात करना बनता है थोड़ा सा 2 मिनट. और यहाँ पर कोई बुंडेसलीगा फैंस या जनरली देखा तो बता दीजिए. बाय द वे, ला लीगा में हम मिस कर दिए थे एटलेटिको मैड्रिड का गेम भी. दे हैव ड्रॉन टू रियल सोसिएडाड अवे, लेकिन और काफी लोग ने बोला एटलेटिको मैड्रिड हगेगी, वही हो रहा है. हैविंग सेड दैट, भाई ग्रीजमैन अगेन ही इज कमिंग ऑन अ सब्स्टिट्यूट ओनली. या ही इज प्लेइंग ओनली 45 मिनट्स. उनको जो पे करना है ना, जो क्लॉज है, बहुत बुरा क्लॉज है. ग्रीजमैन के लिए बुरा हो रहा है, एंड एटलेटिको मैड्रिड इज नॉट हेल्पिंग देम इन माय ओपिनियन. एनीवे, coming to quickly to Bundesliga, just couple of minutes. भाई लेवरक्यूजन 2 फ्राइबर्ग 3, क्रेजी रिजल्ट. और मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर देता था आपको, मतलब डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव नॉट वॉच्ड दोस गेम्स. मैं नहीं क्लेम करूंगा मैं सब चीज देख रहा हूँ रोज, लेकिन अगेन हाइलाइट्स एट बेस्ट देखता हूँ मैं व्हेन कम्स टू अदर लीग्स, अगर टाइम सेम होता है. तो यहाँ पर देखिए, लेवरक्यूजन 2 फ्राइबर्ग 3. बायर्न म्यूनिख yet again dropping points. Is it happening because मैंने जिंक्स किया है? मैंने बोला बायर्न म्यूनिख इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन यूरोप. उसके बाद भाई 2 बार ड्रॉप कर दिए पॉइंट्स. ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये बायर्न म्यूनिख. बाय द वे, किमिक हैड अ फैंटास्टिक गोल, जाकर देखिए. पावार्ड हैड अ डिसेंट गेम फॉर अ चेंज, ठीक है, लेकिन आई थिंक बायर्न म्यूनिख ऑन द होल, आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट. देखते हैं लाइनअप, देखते क्या था एग्जैक्टली, लेकिन जहां तक मुझे याद है, आई कैन प्रोबब्ली आर्ग्यू दैट I don't know, maybe they are, मुसियाला जो है अगेन यंग प्लेयर है, ही इज बीन डूइंग वेल. फिर बीच में एक गेम में ड्रॉप किया था, वो क्यों ड्रॉप किया था पता नहीं. ही केम ऑन द बेंच, मे बी जस्ट रोटेट कर रहे थे. दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस. लेकिन अगेन 3 द बैक, डज इट सूट बायर्न म्यूनिख? वो सॉरी 4 द बैक खेल रहे, लेकिन 3 द बैक भी खेले हुए. लास्ट सीजन दे हैव प्लेड 3 द बैक, राइट? सो शुड दे चेंज द फॉर्मेशन 3 द बैक? इफ यू रिमेंबर लास्ट सीजन क्या हो रहा था,
तो वहां पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वर टाइम्स एंड मुसियाला वाज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट मिडफील्ड, और यू हैड बेसिकली साने और कोमन काइंड ऑफ प्लेइंग up front in the front three. तो वहां पर is that better off? Should you give Musiala basically that kind of एक role rather than the three role in between? आप बोलिए, और it's just the fact that वो बीच में ड्रॉप कर गए थे इसलिए उनका फॉर्म गिरा. I don't know. Let me know वहां पर what do you think? Bayern Munich, लेकिन of course एक और इंटरेस्टिंग हुआ था बहुत, और वो था फ्रैंकफर्ट बीटिंग लाइप्जिग 4-0. ओ माय गॉड, मैं सुन रहा था भाई टीमो वर्नर स्कोर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. टीमो वर्नर शुरू किए, उनका रेटिंग सबसे कम. यस, एनकुकू भी शुरू किए, उनका रेटिंग भी सबसे कम. ये क्या हो गया? फ्रैंकफर्ट 4 गोल्स. और कमाडा एक बंदे को हमेशा मैं प्रेज करता हूँ इन फ्रैंकफर्ट, ही स्टूड आउट इन दैट गेम. एनी बुंडेसलीगा फैन, लेट मी नो. ओके, नाइस, थैंक्स. एंड ऑफ कोर्स टुमारो यूसीएल फैंटेसी आल्सो. हाँ, मतलब मैं आई ट्राई टू क्रिएट अ टीम यार. उससे पहले एक कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल दूंगा विद यूसीएल फैंटेसी ग्रुप होपफुली, एंड विल डू दैट. आई होप आई कैन फाइंड द टाइम, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आई इंसिस्ट ऑन डूइंग दैट. चलो, चो असिस्ट, चलो वहां पर दे देते भाई चो. लेकिन बायर लेवरकुसेन क्या बोलेंगे यार, दे शुड हैव वन दैट गेम. यस, ही गॉट द मिनट्स दैट प्रोबब्ली वी वांट, और ऑफ कोर्स एक असिस्ट आप बोल सकते हो, दैट इज व्हाट इज गुड. बट is that the quality that he's as in having in that team? I don't know. Let's see. Time will tell. Like, again, for people out there, Callum Hudson-Odoi came off the bench. Just to let you know, I think Union Berlin is a good team. Actually, saw them in bits. Okay, but again, Bayern Munich के साथ, would you expect them to actually keep them at bay with that strong team? ऐसा नहीं कि they rested a lot of players. So थोड़ा सा surprising था मेरे लिए. And again, I know that maybe a couple of matches we might not have discussed. Let me know अगर मैंने कोई major match miss कर दिया है. But literally, man, I know it's a very long stream. हमने काफी सारा discuss किया है. We have discussed about, इसलिए मैं live आना चाहता था ना. We have discussed and got your opinion because controversial opinions थे. Be it Chelsea, be it Tottenham, be it Liverpool, be it Man City, be it Barcelona, Real Madrid, PSG, and a little bit of Bayern Munich as well, or Milan, of course. Milan का भी बात किए थे. Talking about Serie A quickly. By Juventus dropped points and Milik scored a goal. So what do you think? Serie A will be a two-horse race ki Roma will come in, Roma and Juventus will come into it. क्या लगता है? मतलब I still feel that AC Milan and Inter Milan probably have that momentum ज़्यादा compared to Juventus and Roma. लेकिन Juventus have the players, अगर Allegri ठीक से खिलाते हैं उन लोगों को. I still feel that it can be a three-horse race with Roma just in behind. वो मुझे लगता है. आप लोग बोलिए what is going to be. And yes, थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए भाई. लाजियो नापोली भी था. थैंक्स यार आयुष, एब्सोल्युटली शाउट आउट है आपको यार, क्योंकि वो भी एक बढ़िया गेम था. मैंने हाईलाइट देखी थी भाई. एंड मतलब मे बी आप बोल सकते हो मैं एक प्लेयर के बारे में काफी दफा बोला हूं, एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम गिविंग अ शाउट आउट देयर, बिकॉज I think one player who stood out again, Napoli का, if you actually watch the games recently, and एक player जो stood out करता है वो है Kvicha, who is a Georgian. Kvicha, Kvaratskhelia, that's how we pronounce it. I don't know, but लेकिन just like Charles D. Cutler, you know, that's a very difficult pronunciation, लेकिन वही है. Kvicha, he is a brilliant player. उन्होंने मारा एक winner, तो that was brilliant for them. लेकिन लाजियो मैन, आफ्टर द लास्ट गेम मैंने सोचा था भाई पेड्रो इस गेम में भी आके कर देंगे, लेकिन भाई नहीं कर पाए इस बार. लेकिन इट वाज डेफिनेटली क्विचा एंड दैट वाज अ गुड गेम. नापोली 1-1 अगेंस्ट लाजियो अवे. ओके, लेट्स टेक a few more. Feeling sorry for Vlahovic. भाई कोई नहीं, Vlahovic will come back. And people, yes, we have not even reached 125 likes. 150 likes का टारगेट है भाई. लाइक बटन दबा दीजिए और याद रखिए भाई 7 बजे, करीबन 7 बजे वी आर लाइव ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, और कल अराउंड द सेम टाइम दिस चैनल पे वी आर लाइव फॉर द यूसीएल प्रीव्यू ऑन द होल. क्वारा या अरे ऑलमोस्ट फुल टाइम ही मानिए यार ऋषि, डेफिनेटली हमें करना है, बट अगेन विद ऑल योर बैकिंग वी कैन डेफिनेटली गो फुल टाइम. इट्स इंटेंट इज दैट डेफिनेटली. तो आप हमें चाहिए एज मच एज सपोर्ट, इसलिए आप देख रहे हो नीचे जो चल रहा है ना लाइन से, आप देखिए स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा होगा. वी आर नाउ मोनेटाइज्ड ऑन बोथ द चैनल्स, बट वी नीड योर सपोर्ट to kind of upgrade the channel slowly but steadily. If you feel that we deserve it and you can afford only then. But आप अगर like करते हो, subscribe करते हो और हमें देखते हो, enough kind of things on our channels, it's enough. And even give us feedback as much as possible. आप हमें follow कर सकते हो on Almighty Blues FC, be it on Twitter or on Instagram as well. Okay, again चलो अभी के लिए
आई थिंक यार भाई लड़िए मत सब लोग चैट में भाई. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, सो वी हैव टू मेंटेन डिकोरम टू सम एक्सटेंट. लेकिन हाँ, बैंटर थोड़ा बहुत चलता है एट बेस्ट. आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द गेम्स नाउ. अभी के लिए लेट्स गेट रेडी फॉर द बिग वन. ऑफ कोर्स देयर आर टू बिग वंस इन फैक्ट. Not just India Pakistan or Almighty Sport Plus 7 o'clock, but we will also try and follow Manchester United Arsenal. भाई सब लोग कमेंट में डाल दीजिए क्या हो रहा है, स्कोर लाइन प्रेडिक्शन मैनचेस्टर आर्सेनल और इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा, बोल दो इन द कमेंट सेक्शन. यस, पीपल आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम आर फुटबॉल फैंस हियर, but again Almighty Sports Plus way we'll do both, so don't worry about that. Do not forget to subscribe, do not forget to hit that bell notification icon, because 7 o'clock we are live. Till next time, take care, and yes, come on, Champions League is also coming, so कल बात करेंगे उसके बारे में यहाँ पर भी. Bye.